Susri, Susri ma'am, are you there? Today I will discuss about the effective utilization of the food resources. Effective utilization of the food resources. In effective utilization of the food resources, first I will discuss about the food budgeting and food selection, then food storage, food preservation and maximization of the nutritional benefits, food safety. What do you mean by budgeting? अमित सर कहतु बजेटिंग माने हमें कौन बुझीबा What is the meaning of budgeting? केते खर्च करिबा पे खाद्य लागि हां माने जेतेबेले प्लानिंग करो प्लानिंग करिबा हम खर्चटा को प्लानिंग करंती जे केते कोन करिबा खर्च तो 80 फूड बजेटिंग कहले हम कोन बुझीबा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फूड बजेटिंग जे हम खाद्य रे कोन कोन रहिबा दरकार विटामिन्स मिनरल्स within our budget within our budget ठीक because na while formulating the menu plan for the any kind of groups the groups that may be HIG LIG or MIG हमें जो ग्रुप रो भी हमें फूड मेनू प्लान प्रिपेयर करबा या हमें ताको एडवाइस करबा तो प्रथम हमें जानिबा दरकार जे से को ग्रुप रे बिलोंग्स करे ओके बिकॉज आमे जदि गोटे पेशेंट रो प्रोटीन रो रिक्वायरमेंट थिबो एंड आमे ताको प्रोटीन रो सप्लीमेंट रो सोर्सेस ओडा को प्रोटीन रो सप्लीमेंट जेंति आर्टिफिशियल सप्लीमेंट पाउडर आछि ताको आमे लिखि पकोतबा किंतु पेशेंट सेति की एलआईजी ग्रुप रो हेथिबो एंड से द बजेट रो लिमिटेशन बाहर थिबो परचेज करिबार तो तार किछि माने ही नै आमे अजे जेतबा आमे न्यूट्रिशनिस्ट आमे ताको गाइड करबा होय तो गोटे थर से परचेज कर दे पारे बट नेक्स्ट ऑनवर्ड से ताको आ करि परिबो नै जहा पळे कि हमर जोटा मोटो थिबो ताको आमे जहा आमे फुलफिल करबा त सारा माने पाई परिबो नै तो बीइंग ए न्यूट्रिशनिस्ट आमे इकोनॉमिकली a patient या जहाँ पर हम formulate करूँ से को groups से belongs करे accordingly we will plan the menu plan okay that is the budgeting. Budgeting is nothing. Budgeting means a budget is written down plans of how the money available to you is going to be used to meet the needs of the family okay. For example आमे यदि मन कर जनकर budget थिबो 1500 रो आ से इन दैट केस इफ यू विल प्रिस्क्राइब वन प्रोटीन सप्लीमेंट एवं तार जदि बजेट आसो 1300 रो 1400 टंका तो तार किछि माने ही नै एई भले बजेट फूड बजेटिंग हमें प्रिपेयर करबा तो सब बेले हमें तो फूड बजेट हमें प्रिपेयर करू छथि तो सब बेले पेशेंट रो इकोनॉमिक स्टेटस ऊपर तार इनकम को देखि कि ही हमें अकॉर्डिंगली वी विल प्लान द मेनू प्लान हमें सेही अनुसार ही ताको गाइड करबा निहाती दरकार. Income is what a family earns during a specific period of time in cash or time. Cash is the weekly or monthly earning and in land is what is grown by the family for its use. For example, मानेकर हमें किछि जेमति कि vegetables हो fruits हो किंबा grains pulses oilseeds fruit vegetable or kept for milk and poultry for egg and meat. Any facilities that is provided to the family like a free house, free medical treatment or use of a car is also a part of the family income. That means expenditure on the other hand refers to the money that we pay for items we buy and the service we receive.
जेते बोले हमें बजेट प्लान करबा तो किछटा स्पेसिफिक स्टेप्स को हमें निहाती रूपे माइंड रे रखिबा दरकार जेमती कि हमें make a list of the item on which you are needs to be spend money. First, this is a very vital point. First you plan out a list of the item on which you need to spend the money and arrange this item in order to preference wise that essential ones like the food, clothing, shelter, health and education get top priority because amako sabutu bodo jinsa hochi health and education. Food is also the primary and clothing, shelter is also. Estimate the probable expenditure on each of these items and estimate the total money that will be available and make an estimate of the maximum essential expenditure that you can incur on each of the items of expenditure with the assured income. Now balance the budget to bring your expenditure into line with the income. Okay, a सब steps को हमें while making the budget ना all these points are very essential. First we will be plan. First we will make a list of the items on which you need to spend the money, and after that you arrange the items in order of preference ways. Like the first you will give the more preference for the foods, clothing, shelter, health, and the top priority for the education. Estimate the probably expenditure on each of these items, estimate the total money that will be available, and then make an estimate of the maximum essential expenditure that you can income on each of the items of expenditure with the assured income. And it is steps in making a budget. Then factors influencing a food budgeting. कौन factors हमको affect करवा during the preparation of budgeting? First kono na specifically na allocating money for food out of our total income and then deciding how to spend it. This is called as food budgeting. What is the meaning of food budgeting? Food budgeting is nothing. Food budgeting is defined as the specifically allocating money for the food out of our total income and then deciding how to spend it. That is called as the food budgeting. And what is the factors influencing the food budgeting? While preparing the budget for the food, na, what is the factors influencing the food budgeting? First one is the first one hi paribo na the income of the family. Second one is the खाली तो income को देखिले हबनी जत्ती की income होतो तापर हमको देखा पड़ो केते बड़ा family either से nuclear family ना गोटे समस्त जो मिलीमिशी के रहन the size of the family is also हाँ सर जॉइंट फैमिली कौन कहले सर जॉइंट फैमिली हाँ जॉइंट फैमिली हो कि हमरो न्यूक्लियर फैमिली हो फास्ट में प्रिफरेंस तबा हमरो इनकम केते होउची आफ्टर दैट आमे देखिबा जे साइज ऑफ द फैमिली बिकॉज़ हमर जत्ते बड़ साइज हेतिबो से अनुसार जति इनकम सोर्सेस सेते के नथिबो ताले आमे से अनुसार फॉर्मुलेट करि परिबे हम केते बजट रे केते की कोन कोन हेल्दी बा न्यूट्रिशियस फूड को आमे इंक्लूड करि परिबा हम बजट रे थर्ड जिंस होउची करेंट फूड प्राइसेस सब बेले एई मंथ रे जति आलू किलो 15 टंका अछि नेक्स्ट मंथ रे होय तो सेटा 50 टंका भी हे जाय पारे बट हमर एई मंथ रे जति 20 टंका माने 2000 टंका इनकम थिबो नेक्स्ट मंथ रे हम केबो मध्ये सेटा बढ़ी की 5000 5000 हे जाय नथिबो तो सब बेले करेंट बजट परे मध्ये गोटे निहाती गोटे ए रहबा दरकार एंड द nearness of the family to the source of food supply and the opportunity for home production and processing of foods. It is also the very vital point. Opportunity for the home production and processing of the food. Opportunity of the food production, home production means what? जेहेतु आम चिंता बर्तमान आम डिस्कसन कर फूड बजेटिंग को लेकिन होम प्रोडक्शन कहले हम कौन बुझीबा एठी किछि भी मैडम किछि भी निज घरे जदी किचन गार्डन वगैरह घरे तयारी होतु किछि भी पन्नी परिवा हेई पारे किछि भी खाद्य हेई पारे जोडे कि हमें घरे बनान घरे हमें जोटा कि हमें लोकली अवेलेबल जेमति हम अपन माने किचन गार्डन करी कि तो किछि किछि करि देई परिबे किबा जो समय जो जिंस बेसी प्लेंटिली अवेलेबल रोजे आ सेही जिंस को आनी कि प्रॉपर्ली यूटिलाइज करी कि हम ताको केमति स्टोरेज करी कि रखि परिबा फॉर द प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम
एंड सबुठ बड़ जिनस होची आमे को समय रे को जिनस हम बजेट भितर आमे ताको बहुत सारा स्टोरेज करि परिबा जेमति कि देखंतु जति माने कर शीत दिन हमरो प्लेंटिली आमला मिलुची तो शीत दिन पळैला परे आमला तो मिलिबो बट सेति कॉस्ट आपन को आसीबने बट आपण माने गोटे न्यूट्रिशनिस्ट हिसाब रे आमे ताको केमिति कोन करिकि से आमला को आनी कि एमिति वरे ताको प्रिजर्वेटिव करी रखबा जोटा कि 6 मंथ रो 1 ईयर पर्यंत हम ता कंज्यूम करि परिबा एंड तारो जेमति एफिकासी कोनसी प्रकार चेंजेस होउनथो एफिकासी तार एफिकासी सेमिति ही रहउतबा एंड हमको फाइनेंशियली हमको एते कम पड़ जिवो जेंति जदि माने कर हम मुगो किबा बिरी ब्लैक ग्राम डाल हो उरड ग्राम डाल हो ए जे को जतलो प्रोडक्शन समय रे जदि हम ताको तार सेल्फ लाइफ पीरियड को देखि कि तार माने क्वालिटी को देखि कि जदि हम एट ए टाइम परचेस करि कि गोटे वर्ष या 2 वर्ष पर्यंत हम रखि परिबा से पल्सेस को से ल्यूजियम्स को सेटा मध्ये गोटे कॉस्ट ये को बजेट को हमें कंट्रोल करि देई परिबा तो ए सब जिंस फैक्टर्स जोटा को अफेक्ट करे व्हाइल प्रिपेयरिंग द फूड बजेटिंग an opportunity for home production and processing of the foods and relative interest of the family in food and in other commodities the income of the family जो factors का influence करे food budgeting the first one is the income of the family केमती affect करछि हमर food budgeting को very easy points के elaborate करि परिबे कहंतु मते केमती हमर एटा food budgeting रे income of the family vital role play करे हाँ हाँ मैडम गुड आफ्टरनून मैम तो कहबा कथा तो गोटे फैमिली जदी तार इनकम रहउची 20,000 टंका तो ताकू से हिसाब रे घर रो बजेट टाकू मैनेज करबा पड़िबो ता सहित वेरी गुड आफ्टरनून हेलो तो बजेट टाकू मैनेज करबा पड़िबो जेंति ता खाइबा पीबाटा केमिति मोर मासुक मास मु वेजिटेबल एति की परचेस करबी तो अपन जोटा कहिले आमला टाकू 6 मास खाया को पड़िबो ताकू प्रिजर्वेटिव ताकू धन ओड पाउडर करी रखि परिबी जे प्रोसेस हेल्दी प्रोसेस रखी परिबा रिजर्व करी नॉट ओनली हम एमती डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड इज आल्सो अवेलेबल लाइक द पेरिसेबल फूड नॉन पेरिसेबल फूड हम सब फूड को तो हम प्रिजर्वेटिव करी प्रिजर्वेशन दे ज्यादा टाइम तक हम रखी परिबनी बट किछि जिंस अछि जेंति कि हम यूज एम किनिबा एंड जोत्री कि हमरो बजेट भी हमरो बहुत कम पड़ी जिवो एंड सेटा हमको वर्ष संख्या में तक यूटिलाइज करी परिबा ओके एंड ए सब पाई बोली हमरो इनकम सोर्सेस होची बहुत बड़ जिंस बिकॉज़ जेतो बळे जदी हमर इनकम किछि नथिबो बहुत कम थिबो जो माने स्पेसिफिकली वेली एलआईजी ग्रुप रो लोअर इनकम ग्रुप रो जो माने बिलोंग्स करंती से माने हमें कोन भाबंती से माने भाबंती 100 ग्राम डाली को प्रत्येक दिन किनिबे जो 100 ग्राम की प्रत्येक दिन से माने 2-4 टका एक्स्ट्रा देके किनिबे बुझी पले ना जेतले हम किलोटी डाली किनु जे 160 किलो 180 टका रे से माने जिबे 100 माने 100 ग्राम डाली को आउ 3-4 टका पछे एक्स्ट्रा देके किनु कि तांको मेंटालिटी रहिबोनी जे मु एट ए टाइम एकाते 2-3 किलो किनु दिबी एंड दैट 2-3 किलो हुए तो मोर 25 दिन की 30 दिन हे जाई परिबो तो सेइथिरे मध्ये सितर फूड बजेटिंग को कंट्रोल करि परिबो एवं तार ये को मध्ये जो इनकम सोर्सेस एलआईजी ग्रुप रे हेले मध्ये किछि कैंसर सितरे से सेटा को सेव करि दे परिबो एमती गोटे बहुत लोकंकर कांसेप्ट है जे माने एट ए टाइम जदि हम ह्यूज अमाउंट किनि देबा से अनुसार एक्सपेंडिचर मते ज्यादा है बिल्कुल सेयार एमती नुह जे माने हमें 5 किलो डाली किनि कि घरे प्रिजर्वेशन माने रखी देइ छथि स्टॉक करि छथि एंड 5 किलो डाली आपन को जदि बजेट हिसाब से 5 मंथ्स जीवो एमती नुह जे आपन घरे अछि बोली 3 मंथ्स आपन ताको खर्च करे इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द फैमिली जे आपन को कुकिंग वगैरह जे जार चार्ज रही तार साइकोलॉजी ऊपर ही टोटल डिपेंड करो अदरवाइज ताको जदि हम प्रॉपर्ली नबा ताले हम फूड बजेटिंग को हम प्रॉपर्ली हम कंट्रोल करि दे पारिबा मैम गोटे क्वेश्चन इट अछि गोटे पचारिबा चाहूची जे आपण तो कहले जे आमे जदी वेराइटी ऑफ डाल को पल्सेस को ऐड करि परिबा जेमति लाइक गोटे मार्केट रे अछि गोटे मसूर डाली सेटा टिके हम बजेट हिसाब रे कम आसुची तबरे मूंग डाल भी कम टिके आसुची हरड डाली थारो तो ए टाइप रो जदी हमें बजेट को सेथरे सही मैनेज करिबा पुनी फ्रूट वेजिटेबल भी फ्रूट्स अछि एप्पल तो ऑब्वियसली सीजनल टिके कम भी रहउचे सही बजेट को सही भाबरे हमें तांकर बजेट तांकर इनकम सोर्स को देखि के हमें सेटा को बांटी के तांको हमें सजेस्ट करि परिबा ता माने जोटा आपण कहउछोंदी सेटा तो गोटे कथा और देन टाइप्स ऑफ डाल रे माने आपण जेमति कहउछोंदी हमें जेते बळे हमें देखंतु एठी हमें फूड बजेटिंग ऊपर चिंता करूछंती
माने हमर मेन डिस्कशन रोची फूड बजेटिंग को नहीं तो फूड बजेटिंग रे हमें ए भी सब बेले फोकस पॉइंट रहबा दरकार जे केते कम खर्च रे हमें केते न्यूट्रिशियस वेल बैलेंस मेनू प्लान हमें गोटे जण को देई पारिबा बुझी पारले तो हमें खाली सब बेले कॉस्ट इफेक्टिव को हमें माने कॉस्ट बजेट को हमें देखि पानी कॉस्ट देखिबा सहित केते हमें न्यूट्रिशियस एंड वेल बैलेंस मेनू प्लान हमें बने करछन जहा पाई भी हमें हम फैमिली पाई चिंता करंतु किबा कहा पाई भी चिंता करंतु सब बेले सेटा को फर्स्ट मेन गोल रखिबा नियत दरकार एमटी नुह जे गोटे जिंसर कॉस्ट ता बढ़ी जाउची माने अधिक टंका दे के किनिले सेटा शरीर पाई सेति की न्यूट्रिशियस बिल्कुल से आनु बहुत कम खर्च रे मध्य अधिक न्यूट्रिशियस फूड आपण एंड वेल बैलेंस मेनू प्लान टे आपण आराम से बने दे पारिबे जेमती जहार पैसा नहीं एमती नुह जे प्रोटीन डेली बेसिस रे खाइबो या बाहर जाय कि हेल्दी वाला जो अनहेल्दी फूड्स को नै कि भाबिबो जे म हेल्दी फूड्स खाउची एंड एथिरे अधिक कोन रहिछि कैलोरीज रहिछि प्रोटीन रहिछि फैट रहिछि बट दैट इज नॉट न्यूट्रिशियस तो आमे घरे रहि कि मध्य किछि न करि कि मध्य प्लेन छतुआ रे मध्य आमे अधिक न्यूट्रिशियस जिंस जेथिरे प्रोटीन पाइ परिबा कार्ब पाइ परिबा मिनरल्स पाइ परिबा एंड आपणकर फाइबर रिच मध्य पाइ परिबा सब तक मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से गोटे मेनू खाइ के लंच रे मध्य खिचुडी नै कि खिचुडी खाइबा एते पैसा खर्च होबनी माने हम बजेट भीतर रहबो एंड दैट इज आल्सो मोर हेल्दियर देन दैट ऑफ द बिरयानी बुझी परछन ना ने आमे बजेट को कंसर्न करबा एटी बट हमकु सब बेले फोकस करिया को पड़े छ आमे सेति की बजेट केते हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस वेल बैलेंस मेनू प्लान गोटे बनै पारु छंती ओके and then the income of the family it out during the factors influencing the food budgeting the income of the family gote boda jinsa and influence of income on the food selection it out देखंतु जते बेले हमर इनकम ऊपर ही फूड सिलेक्शन मेनली डिपेंड करे जेमति कि जते बेले फूड आइटम हम सिलेक्शन करछंती डिफरेंट ग्रुप्स रो लोक अछंती जेमति एलआईजी हो एमआईजी हो एचआईजी हो जदि एलआईजी ग्रुप रो लोक माने जते सीरियस कथा चिंता करते त से माने दुईटा जिंस को ही चिंता करंती दैट इज द व्हीट एंड द राइस बट जते बेले मॉडरेट इनकम जो माने एमआईजी ग्रुप रो लोक माने थांती से माने कोन करंती say rice or wheat purchase karanti but they are purchasing the very good quality of rice and the wheat because they are belongs to the MIG group and जो माने HIG group रे थांती से माने कोन करंती ना सारबती wheat बासमती राइस हो ए टाइप रो किछि से माने चूज करंती ता माने हमें एथु कोन भाबु चंदे से LIG HIG MIG ग्रुप रो लोक मन को समस्तंकर माने निहाती दरकार राइस एंड wheat बट से बजेट को नहीं कि से माने परचेस करन देखन तो जते बेले गोटे गां लोक कथा हम चिंता करबे से माने स्पेसिफिकली एलआईजी ग्रुप रे जिबे एंड से माने कोन करंती गां को जिबे गां रे आपनकर मोटा मोटा चावल को से माने अधिक प्रेफर करिवे कारण से मानकर बजेट ता बहुत कम एलआईजी ग्रुप रे से माने बिलोंग्स करंती एट द सेम टाइम जो माने एचआईजी ग्रुप रे रहंती से माने कोन करंती पूरा रिफाइंड सीरियल्स को चूज करंती रिफाइंड सीरियल्स से कोन नियंती से माने पूरा बासमती राइस को देखिबे जेमति सुत्ता भलिया चावल को से माने सुत्ता भलिया हेतिबो देन से बहुत लेंदी थिबो लंबा थिबो पूरा आखिर बाळ भली देखाउ तो से भलिया चावल को से माने नेबे आ व्हीट मध्ये से माने कर दरकार पूरा रिफाइंड व्हीट एमति आपण माने देखिबे जे माने गरीब लोक माने स्पेसिफिकली गां गहळे रे आपण देखिबे जेते बेले अटा से माने किनुते से माने कहबे चकोडा खाइ के अटा देई दियंतो एतिक एटलिस्ट से मानकर अछि किंतु आमे जतो शहर को पहुंची जाउ ना आमे कोन करू चकोडा बिहीन माने बिना फाइबर रे हमको कोन दरकार ये दरकार अटा तो एइत्रे कोन होची देखंतु एलआईजी ग्रुप रो सिलेक्शन फूड सिलेक्शन से मानकर होय तो से मानकर बजेट हिसाब रे से माने सेटा सिलेक्शन करछन बट दैट इज मोर न्यूट्रिशियस एंड मोर हेल्दियर एंड मोर वेल बैलेंस मेनू प्लान देन दैट ऑफ द एचआईजी ग्रुप तो एई क्षेत्र रे हम माने कोन कहबा जे जते बेले फूड सिलेक्शन होची सबटो वाइटल जिंस आमे जते बेले गोटे मेनू प्लान बनाउछन सबतरे को ग्रुप रो को ये रो हमें फूड को हमें नो छंदी सिलेक्शन करू छंदी सिमिलरली जदि हमें पल्सेस कथा कहबा सिंपल हमरो जो माने एलआईजी ग्रुप रे बिलोंग्स करबे दे विल बी से माने बहुत आनिबे कोन ग्रीन ग्राम डाल को से माने प्रेफर करिवे एंड जो माने टिके एमआईजी ग्रुप रे लोक माने से माने रेड ग्राम डाल अदरवाइज दे विल कंज्यूम द ब्लैक ग्राम डाल and those are belongs to the HIG na they will more like to take that red gram dal rajma bengal gram dal like that तो एठी आपण माने देखि परिबे जो जेमति एलआईजी ग्रुप कथा हम कहली ग्रीन ग्राम डाल एंड एमआईजी जो माने रेड ग्राम एंड द ब्लैक ग्राम बट जो माने एचआईजी ग्रुप रा रेड ग्राम खाइबे राजमा नेबे देन बेंगल ग्राम नेबे तो ए जो तीन कैटेगरीज भीतर आपण कोटा भाबुचंती कोटा बहुत हेल्दियर
एटी दीटा जिनस आपण माने देखिबे गोटे देखंतु एलआईजी ग्रुप रे गोटे देखंतु एचआईजी ग्रुप रे देखंतु एलआईजी रे से माने कोन करछन्ती ग्रीन ग्राम डाल नउछन्ती तो ग्रीन ग्राम डाल गोटे होची सबुठु मो फ्रॉम द डे 1 मु कहिछि आपण मानको सबु जेते प्रकार डाल अछि सबुठु बेस्ट डाल होची आपण मानो ग्रीन ग्राम डाल जेटा कि ओडिया रे हम कहबा मुगो डाली चोपा युक्त मुगो डाली सेटा होची बेस्ट बिकॉज़ सेइतरे हां के किछि कहउछन्ती कि मैडम अमरंथ कौन अच्छी सेकेंड रे कोन कहले लो इनकम रे आपनकर अच्छी जे अमरंथ AMARANTH सेटा होची सेटा कौन नाली मैडम सोला सागर से जो मंजीटा आसे ना सेटा आज्ञा बुझबैले ओहो नाली अच्छा कोसले अच्छा सागर मंजी सेटा तो हाँ मु कहबा कथा एलआईजी आ एचआईजी रे कोंटो एलआईजी रे ग्रीन ग्राम डाल ने तो ग्रीन ग्राम डाल ता गोटे एई भलिया डाल जोतरे कि आपण माने सबो केस रे माने इवन जते बळे गोटे पेशेंट गोटे लोक रोगी ही जाउ आ सेही समय रे ग्रीन ग्राम डाल ही गोटे डाल जोतरे कि प्रोटीन बहुत गुड क्वालिटी प्रोटीन है एवं सी वेरी गुड फॉर द हमर जीआई ट्रैक्ट रे कोन सी प्रकार इंपैक्ट पकै न इट्स वेरी गुड फॉर द एब्जॉर्प्शन and it is also more healthier than other types of dal देखिथिबे के जनो डाल प्रोडक्ट डाल खाइले कोंती मोरो एसिडिटी होची हार्ट बर्न होची गैस फॉर्मेशन होची बट इन दैट केसेस आल्सो यू कैन एडमिनिस्ट्रेट दैट ग्रीन ग्राम दैट इज वेरी गुड फॉर द हेल्थ तो एठी देखंतो जेहेतु से माने एलआईजी ग्रुप रो तो सेमान का पैसा एते नाही सेमान को तो सेमाने चूज करचंदी ग्रीन ग्राम एट द सेम टाइम एचआईजी ग्रुप रो देखंतो सेमाने राजमा नउचंती या छोले नउचंती सेउडा मध्ये दरकार सेउडा को मध्ये हाई प्रोटीन बट हमको दरकार विद इन द बजट भितरे केते न्यूट्रिशियस वेल बैलेंस मेनू प्लान हमें देई परिबा सिमिलरली जदि हमें जदि एलआईजी ग्रुप को देखिबे आपण ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से माने जोटा लोकली सीजनल रीजनल वेजिटेबल्स मिलतो ताको अधिक प्रेफरेंस देबे बट एलआईजी ग्रुप लोक माने से माने कोन करंती स्पेसिफिकली एनी सीजनल वेजिटेबल्स एंड जोटा ताको गां रे लोकली जोडा को मिलुथुबो जेति जनी समय जति जनी मिलुची जनी अधिक पसंद करंती या आपण को ब्रिंजिल होटल गार्ड्स हो किबा अमरांथस जोटा सेटा भी एंड एलआईजी ग्रुप लोक माने स्पेसिफिकली से माने कोन करंती जोटा कि बेल पेपर हो किबा कैप्सिकम हो किबा आपण ब्रोकोली हो किबा जो सलाड्स ड्रेसिंग पे विभिन्न प्रकार जो हेल्दी लीव्स अछि ताको से माने एक करे तो हमको हम बजट भीतर ही हमको मेनू प्लान बनेबार अछि आ जोटा अधिक न्यूट्रिशियस ताको नियत रूप डाइट शामिल करबा कथा एंड जिते बळे हम बजट प्लान करछंदी द साइज ऑफ द फैमिली मोर वेरी इंपोर्टेंट बिकॉज़ जदी हमर जेते माने जेते अधिक मेंबर थिबो सेही अनुसार हमें मेनू प्लान हमें माने हमर बजट जहां भी होना काहे कि हमें जेति की लोक थांतु ना काहे कि बट सेति की लोक को आम इनकम भीतर ही हमें तंको केते न्यूट्रिशियस हेल्दी फूड हमें दे परिबा सेटा गोटे होची बडो जिंस एंड करंट फूड प्राइसेस आल्सो देखिथिबे आपनकर फूड गोटे एमिति जिंस जोटार प्राइसेस सब बेले कांस्टेंटली से गोटे रेंज भीतर जाई नथा एटा सब बेले मार्केट रे अप एंड डाउन होता है तो आम बजट तो गोटे मासरे या गोटे वर्ष रे एपट सेपट एमती ज्यादा माने करे एई वर्ष रे मोर 10,000 टका इनकम रहउची मंथली 10,000 लाख मो पाउची एमती नुहची दिमास माने हमर जो बजट ता मते सेही विद इन द इनकम हमर जति की इनकम सेही भीतर हम तको शामिल माने सेति की रेंज and nearness of the family to the sources of the food supply that is a very vital point जो जिंस भी होना काहे कि ना हमको nearness of the family to the sources of the food supply that means हमें जिते बळे जो भी जिंस हम करूछन the cost of the food in the area of its production is very much lower than the cost of in the city or the town market रे कोन पे ना you are paying for the transport of the food from the one place to another where it is produced to the market and second one is the and paying for the rent or the market area also you are also providing income to the people who make a living by selling the foods in the city market तो एटा गोटे वेरी वाइटल पॉइंट बिकॉज़ नियरनेस ऑफ द फैमिली टू द सोर्स ऑफ द
फूड आइटम जिते जो प्रोडक्शन होचे सेठू हम जिते दूर रे थिबा तार कॉस्ट मध्ये से अनुसार सेतिकी बढ़ी जाय थाए एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द होम प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ द फूड्स आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस माने जिते दूर संभव आम घरे जेमति कि आपण जदि विंटर रे अछंती तो सेही समय रे हमें ता पूर्वरु ही हमें देखि कि किछि धनिया पत्र हो किबा घरे किछि आपणकर भृषंगा पत्र हो किबा घरे गोटे सजना साग हो किबा गोटे छोटो किचन गार्डन करिकि किछि हमें साग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो किबा आपणकर जो पपैया हो एमती किछि जिंस समस्त प्रकार साग मध्ये ताको भी हम माने कर दे पारे अदरवाइज आपण माने मेथी हो कोरिएंडर हो किबा जहां भी कंचा लंकाटी हो ए भले किछि हम कर पारे जोटा कि मध्ये हम बजेट रे बहुत हेल्प करबो एंड सेकंड थिंग इज दैट हमें निजे निजे किछि ना किछि होममेड किछि प्रिपरेशन करिबा बिकॉज जदि जेतेबेले टमाटो बहुत सारा सस्ता हेतिबो से समय रे किछि टमाटो सॉस बनेबा किबा किछि जेलीस बनेबा जाम बनेबा टमाटो प्यूरी करी कि मध्ये फ्रीज रे रखि पाबो विभिन्न प्रकार पिकल्स ता गोटे निहाती रूपे घरे गोटे रखिबा दरकार नै आमे यदि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू रो भी आमे कहबा पिकल्स ता निहाती रूपे हमरो माने फूड रे निहाती आमे इंक्लूड करिबा दरकार आपण माने भाबंतुनी जे पिकल्स ता हम पई किछि खराब बोली मु एठी कहूनी जो मानकर सीकेडी रोहुची क्रॉनिक किडनी डिसऑर्डर किबा इधर सीकेडी 1 हो 2 हो 3 हो किबा ईएसआरडी जोटा एंड स्टेज ऑफ रेनल डिजीज सेही केस रे ही आपण माने पिकल्स नेबेनी अदरवाइज आउ समस्तन पई हमें पिकल्स गोटे निहाती गोटे हेल्दी फूड्स हमें केटा भाबिबानी जे अनहेल्दी बिकॉज ना पिकल्स रे कोन थाए देखंतु जो हमर गॉट पई जो गुड बैक्टीरिया रो आवश्यक थाए हेल्दी बैक्टीरिया रो सेही बैक्टीरिया सेठी डेवलपमेंट हेई थाए हम मानकर कोन माने मेन रीजन होची आजिकली जेते प्रकार गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर देखा होची एपीडी एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर देखिथिबे मैक्सिमम लोक मानकर कंप्लेंट थाए जीआई ट्रैक्ट डिसऑर्डर को नेकी कार तो छाती जोडुची कार पेट खाद्य खाइला माने कोनसी प्रकार एसिडिटी होची गैस रो हेडेक होची आ के जनकर कॉन्स्टिपेशन होची के जनकर गैस्ट्रिक अल्सर हो किबा ड्यूडेनल अल्सर हो खाइबा पूर्वरु के जनकर खाद्य मेजर मील्स नबा पूर्व पेट पेन होची आ के जनकर खाद्य खाइसला इवन खाद्य पेट रे पडिला पर किसम पर पेन स्टार्ट होची तो एटा किबा आ के जनकर होल टोटल पेप्टिक अल्सर combination of the gastric and the duodenal ulcer is called as the peptic ulcer तो ए सब समस्या पई हमर जो gastrointestinal tract रे जो आपनकर जो माइक्रोब्स रहिछि जो गुड बैक्टीरिया रहिछि आमे कोन करूछन टिके टिके कोनसी प्रकार डिसऑर्डर हैला माने आमे संगे संगे कोन करूछंती बाहरु एंटीबायोटिक्स आमे नौचंती ना नै जेतेबेले जे कोन इवन गोटे वायरल फीवर हेले मध्ये मैं एंटीबायोटिक्स नौचंती जेतेबेले एंटीबायोटिक्स एंटी मींस कोन एग्नेस्ट बायोटिक्स माने मींस कोन बैक्टीरिया एग्नेस्ट ता बैक्टीरिया रे काम कला भलिया बैक्टीरिया को किल करिया पे हमें एंटीबायोटिक्स नौचंती तो सेही जेतेबेले हमें एंटीबायोटिक्स नौचंती हुए तो से जो माने बैक्टीरिया को हमें मारुचंती बट सेही बैक्टीरिया मरिबा सहित आम जीआई ट्रैक्ट रो जो माने उपकारी बैक्टीरिया गुडा को जोटा कि हमर फूड डाइजेशन पाई हो जोटा आपनकर फूड रो एंजाइम सिक्रेशन ए सब गुड काम करिबारे थाए से गुडा कर पोटेंशियल एवं से गुडा कर मध्ये लाइफ स्पैन पूरा कमी जाए एवं केते कैंसर रे 80 to 90% से गुड बैक्टीरिया गुडा को मध्ये मरि जानते किंतु जति हमें हमर डाइट रे निहात रूपे किछि ना किछि प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक फॉर्म रो किछि बायोटिक मींस आपनकर हेल्दी बैक्टीरिया जेमति कि आपन किछि राति रे किछि दही बनेबे फ्रेश कॉर्ड क्षीर रु दही बने कि सकाळे माने खाद्य खाइबा तो सेहिटारे मध्ये आपनकर गॉट को हेल्दी रखि परिबे किंबा आपण माने किछि दही को छाड़ी कि मध्ये किछि हमें जेतले इडली बनांती चकुली बनांती जो बेटर बने कि राति रे रखि तांती सकाळे ताको ये करी कि नेयंती तो सेहिथिरे मध्ये आपनकर गॉट रो हेल्दी सेटा बहुत भलो और सेहिटा ही हम शरीर को सेहि बले बैक्टीरिया दरकार और सेहि बले बैक्टीरिया आपनकर थाए आचार रे तो निहाती रूपे घरे बनेथिबा किछि पिकिल मध्ये आपण खाद्य रे शामिल करबा निहाती दरकार मैडम टिके आउथरे कोंतु से जीआई ट्रैक रे जोटा कहिले गैस्ट्रिक हरिका हुए सेटा टिके आउथरे कोंतु हां माने मु कहिबा कथा जनरली हमर कोन हुए gastrointestinal tract it starts from the mouth and ends with the anus बुझी परले हमरो जो जीआई ट्रैक्ट रही gastrointestinal tract रही मु पढैथिले फर्स्ट डे रे मते मु कहिथिली प्रथमे हमरो ओरल कैविटी इज अदरवाइज कॉल्ड एज द माउथ पर ओइसोफागस पर कोन अछि आपनकर ट्रैकिया तापरे
स्टोमक स्मॉल इंटेस्टाइन तापर लार्ज इंटेस्टाइन तापर लास्ट को अनस स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, आनस अनस आनल, केनल, आनस बुझि पाले। तो आपनकर ए टोटल जो जीआई ट्रैक्ट रही, जीआई ट्रैक्ट रे किछि हेल्दी बैक्टीरियास रहिछन। हेल्दी बैक्टीरियास देखिथिबे आपण माने किछि गोटे जेतेबेला हमको लूज मोशन हुए जानछन ना, सेतबेला डॉक्टर माने कोन दियंती, कंसल्टेंट माने कोन दियंती, किछि गोटे पाउडर सचेट दियंती, ताको पानी रे डाइल्यूट करिक पिया पे माने पडु O2 powder, O2 powder. कोन पे दियंती सेटा ओआरएस पाउडर मैम ने ओआरएस छाडो, ओआरएस को छाड दियंती, आ कोन दियंती बाइकिंग करे गुड झाडा बैक्टीरिया पतला डेवलप हबो करिया पे। माने कोन सर अमित सर मैम जो बैक्टीरिया मैम जो एंटी बैक्टीरिया गुडाक अछि दैट भी कि एक्टिवेशन हैला पर हमर जो लूज मोशन ता होछि दैट भी कि माने जोटा स्मूथन मोड को जीवो, जोटा कि हमर नेचुरल मोड को जीवो। तो बैक्टीरिया टा को एक्टिवेट करिया वीक बैक्टीरिया टा को स्ट्रांग करिया पे वीक। यस मैम। ता नाटा कोन सर कहबे की सचेट से कोन दियंती कोटा प्रोलैक्टिन गोटे दे मैम O2 दिया जाए। O2 तो सर सेटा ओरताले ट्राबिडोफ्लोक्सासिन ना ओनिडाजोल बुझि पाले। मु कहिबा कथा आपण कहउचंती पाखा पे आंसर प्रा ठीक कहउचंती। मु कहिया कथा गोटे मैम सचेट दियंती हाइड्रोक्लोरिक एग्जैक्ट जिंसोटा आपण जानिछंती बट एक्सप्रेस करिवरे टिके प्रॉब्लम होची, भाभी के कोहंतो मैम एक्चुअली एग्जैक्ट जिंसोटा सही होनी सेटा वाटर सहित जो हाइड्रोक्लोरिक टा मिक्सला पर जो बैक्टीरिया टा को एक्टिवेशन करा दी सी प्रोसीजर ता। हां सुनो हमको प्रोबायोटिक रो सचेट उडा को दे जाए बुझले। से सचेट को आपण कहिथिबे ताको पानी रे डाइल्यूट करिक नबा। यस मैम कहना प्रीबायोटिक गुडा को डाउन हो जाई ते बोले हमें प्रोबायोटिक टा को एक्टिवेशन पे दिया जाए। वेरी गुड, पूरा करेक्ट। एंड आमे सेटा नबा पळे कोन हुए जनरली हमर कोन हुए हमर जेबोले आमे खाद्य रे एई जो मु कहूची जो हेल्दी बैक्टीरिया सेडा को हम डे बाय डे दिन को दिन कमी चली छी। हमर जेते प्रकार शरीर रे डिसऑर्डर होची, रोग होची देखिथिबे माने प्रीवियसली कोन होतला आगुरु आपण माने देखिथिबे जेतेबेला हम अजिया जेजेमा माने समस्त थिले से समय हमर मैक्सिमम रोग होतला जोटा कि आपनकर कोन लोक माने मरुथिले कोथि पे मुरथले डायरिया कोलेरा गुडा पे। बहुत बढ़िया आंसर, थैंक यू, बहुत बढ़िया आंसर, वेरी गुड सर, वेरी गुड। सेते बेलको आपनकर जो भी डिसऑर्डर होतला मैक्सिमम आपनकर इन्फेक्शियस डिसऑर्डर थिला। इन्फेक्शन गुडा को लागि बहुत सारे डिसऑर्डर होतला जेंति कि आपण ट्यूबरकुलोसिस कथा कोहंतो, डायरिया डिसेंट्री कथा कोहंतो, निमोनिया कथा कोहंतो, एई सब डिसऑर्डर का माने एई सब डिजीज गुडा को बहुत अधिक थिला। बट एबे भी आपण लास्ट टाइम में 5 माने 2020 रु आज पर्यंत धरि के कोविड रो देखि चंदी। कोविड माने ये भी गोटे एते माने गोटे वायरल डिसऑर्डर हेले मध्ये केते सारा तार प्रकोप, किंतु एई सब को छाडी देले मध्ये जदि सबटु अधिक डिजीज कोन होची ताले आज का डेट रे हम सबटु कहबा सेटा होची लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। एम आई राइट और रॉन्ग? यस मैम बिकॉज़ ना आपण माने देखिबे हाँ जहाँ घरे भी देखो तो आपनकर कौन सी घरे मुझे भावुनी जो मानकर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर किछि भी नाही बोली जेमति कि डायबिटीज तो आरंभ करी थायराइड तो आरंभ करी पीसीओडी तो आरंभ करी पीसीओएस सीएडी कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो किंबा आपनकर कार्सिनोमा हो कैंसर हो आउ थायराइड पैराथायराइड डिसऑर्डर गॉइटर हो एंड ए आउ मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी आल्सो ए सब गुडा को होची हमर मोस्टली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। आर मुख्य कारण कोन हमर जेते प्रकार लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होची तार मुख्य रीजन होची तीनटा इम्बालांस हम बॉडी रे होची। फर्स्ट होची हमर माइक्रोबियल इम्बालांस समस्त प्रकार गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर मुख्य कारण होची आपण मानकर माइक्रोबियल इम्बालांस। सेकंड होची आपनकर ग्लूकोज इम्बालांस लागि बोली आपण मानकर देखिथिबे आमे जहां भी खाद्य खाउचंती सबु तकरे आपनकर रिफाइंड सीरियल्स आमे केबे मध्य आमे सब बेले कार्बोहाइड्रेट नउचंती प्रत्येक खाद्य सकाळु राती भितर मी फ्रॉम द डे 1 कहिछि आमानकर आजि पर्यंत आपनकर जेतोले मेनू प्लान आपण देखंतु आपनकर थाली देखंतु जोथि कि 60 रु 70% आपनकर थिबो
कौन कार्ब थिबो कार्बोहाइड्रेट्स थिबो Carbs. 70% कार्बोहाइड्रेट आ 30% मिसिकी थिबो आपन का प्रोटीन एंड फैट एम आई राइट और रॉन्ग yes ma'am Yes, actually yes, ma'am. actually ma'am आज का डेट रे हमर तो Yes, ma'am. इंटेस्टाइन वाल भितरे जो गुडाक रही जाउची जेता वाल रे हमर जो प्री रेडिकल्स गुडाक से गुडाक ही प्रॉब्लम करोची डाइजेशन प्रोसेस पई एंड से तो रहिबार कारण कोन कॉज कोन बिकॉज कॉज होची हम मैम जो आमे जो रिफाइंड सीरियल्स गुडा को डेली बेसिस रे आमे खाद्य रे नउचंती आमे माने केबे मैम फाइबर कमी होची lacking of फाइबर खाइबारे fiber मिलुन not only fiber लैकिंग ऑफ lacking फाइबर along with that हमर कोन जिते बोले बॉडी रे ग्लूकोज रो कंसंट्रेशन बढ़ी जीवो जोटा कि आपण मन जति आमे मु कोन कहली ग्लूकोज इम्बैलेंस गोटे तो हैला आपणकर फर्स्ट थिंग हैला माइक्रोबियल इम्बैलेंस सेकंड होची आपणकर ग्लूकोज इम्बैलेंस third one is your hormonal imbalance all these three factors is mainly responsible for the each and every kind of lifestyle disorder आ आज Yes, के अपन जत्ते डिसऑर्डर कथा कहंतु ना ए तीनटा रो इम्बैलेंस रो ही सब तो कहूची आकु छाडी के कोन से जिंस नै जोटा कि पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जोटा पे कि आपन को कोन से देखंतु मने कर आपन कहबे मैडम कोन कार्सिनोमा कोन गोटे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर यस कैंसर जो होची कैंसर को मानको ज्यादा होची जो मानकर बीएमआई स्टैंडर्ड थिबो बुझी पाले जो मानकर बॉडी मास इंडेक्स स्टैंडर्ड थिबो जो मानकर हाइट अनुसार बॉडी रो वेट मेंटेन हेकि रहितो से माने केबे मते एते प्रोन नथांती कार्सिनोमा पाए बुझी पाले आपण देखिथिबे जो माने बहुत मेदबहुलता सेइत्र बहुत सारा हम बॉडी रो माने जेमति कि आपनकर प्रोस्टेट कैंसर हो किबा जीआई कैंसर हो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर हो किबा आपनकर लंग्स कैंसर हो ए एमिति किछटा कार्सिनोमा अछि तार मुख्य कारण होछि आपनकर ओबेसिटी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर रे जो प्रकार कार्सिनोमा होछि तार मेन रीजन होछि आपनकर कोन ड्यू टू ओबेसिटी ओनली ओबेसिटी रो रीजन कोन ओबेसिटी रो मुख्य कारण होछि आपनकर हार्मोनल इम्बैलेंस सेकंड होछि आपनकर ग्लूकोज इम्बैलेंस आ किछि नै ए सब इम्बैलेंस बॉडी रे होछि केमति मैम एक्चुअली फर्स्ट रीजन इज दैट कि आपनकर खाइबारु तो सब प्रॉब्लम हुए काना हमर भी आमे भी पढिथिले बहुत छोटो बेले जे आपनकर पेट रोग रु ही सब तक रोग बॉडी रे व्यापी जाय तेणु करी हमर खाइबार प्रोसीजर ता जदी ठीक न रहे जेमति एग्जांपल आज का डेट रे मोर गोटे बैड हैबिट हमें हमें डेली बेसिस से सकाळु राती पर्यंत हम पार्टी चालुची बुझि पाले ना मैम जंक फूड हां मैम माने जंक इनि फूड कहबे सोइबा को जीवा को थिबा माने सोइबा पई जीवा को थिबा पीरियड रे मध्ये यदि पाखर देखि देबो किछि गोटे डब्बा पाई गेले सेटा सरला पर्यंत कंपटीशन रे घरे सेटा सरला पर्यंत जीवो तो मु कहबा कथा एते सब खाद्य खाइला परे भी एते प्रकार डिसऑर्डर होउची काहे कि ए सब तीनटा इम्बैलेंस माइक्रोबियल इम्बैलेंस रो मुख्य कारण होउची हम टिके टिके जेतलो कोनसे डिजीज होउची हम संगे संगे जाय कि किछि बाहर किछि मेडिकेशन नै जाउचंते मेडिकेशन जेतलो नउचंती हम बॉडी भीतर जो गुड बैक्टीरिया रहिछि इंटेस्टाइन भीतर से गुड बैक्टीरिया गुडा को जोटा कि हम शरीर पे निहाती दरकार तार माइक्रोबियल एक्टिविटी गुडा को धीरे धीरे पोटेंसी तार कमी जाउछि एवं धीरे धीरे सेडा ह्रास पाउचंती ताको बढ़ेवा पई तार पुनी अगेन रीजेनरेशन करिया पे हमको डेली बेसिस रे डाइट रे हमको निहाती रूपे प्रोटीन और फैट रो रिच कंसेंट्रेट माने ज्यादा दरकार अलोंग विथ दैट हमर डाइट ता निहाती रूपे गोटे प्रकार जेतलो हम मेनू प्लान गोटे हम बाढुचंती जन को सर्व करचंती सेत्रे निहाती रूपे गोटे रेनबो डाइट हेतिबा दरकार इंद्रधनु रो जेंति सातटा रंग अछि आपन को खाद्य रो प्लेट रे सेंति 7 कलर्स रो फूड रहितिबा दरकार हमर खाद्य प्लेट आपन माने देखंतु मु कहिबी 100 रु 80% कलर थाउछि से होछि व्हाइट कलर ठीक कोछि ना मु भूल कोछि यस 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 मैम सी दैट एइदर सी गहम हेथै पारे किबा आपनकर चाउल हेथै पारे आमे कोन करंती इवनिंग रे हो मॉर्निंग रे हो रात रे कोन करंती तीन पट चारि पट रोटी खाइ जंते साइड रे गोटे कोन गोटे सब्जी हे गेला माने हमर हे गेला ठीक ना सेटा कोन डाइट गोटे नो सेटा कोन नो गोटे मैम खाद्य तो हमको देखो हां मु कहिबा कथा मु सेटा जति मते केबे आगु को समय होई मु ताले डिटेल्स मध्ये मु आपन को इलाबोरेट करिबी जो 7 कलर्स रहिछि फूड रो जेंति कि आपनकर जो 12टा सिस्टम रहिछि हमर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को धरि कि इंटेगुमेटरी सिस्टम कथा कोंतु कि नर्वस सिस्टम कथा कोंतु रिप्रोडक्टिव सिस्टम कथा कोंतु रेस्पिरेटरी सिस्टम कथा कोंतु एनी सिस्टम तो सब सिस्टम पय सब कलर रो बॉडी रो इंपैक्ट रहिछि आपण कंदमूल मु प्रथम डे 1 रु बार बार कंदमूल को रिपीट करी करी आछि कंदमूल हो बीट हो गाजर हो किबा आपणकर
जो कैप्सिकम मार्केट रे ग्रीन कलर कैप्सिकम रेड कलर ब्लैक बेल पेपर जोटा को कहते ब्लैक कलर ग्रीन कलर येलो कलर मूला मार्केट रे आपण देखिबे गोटे रेड कलर मूला गोटे आपनकर व्हाइट कलर मूला तो ए डिफरेंट कलर्स जदि हम डाइट रे हम निहाती रूपे इंक्लूड करबा तो हम बॉडी रो जो इनबैलेंस होची बुझियला हार्मोनल इनबैलेंस हो कि हम सिस्टम रे जोटी भी गड़बड़ी होची ताकू सी ऑटो नॉर्मलाइज करिया पे हेल्प करे बट आमे माने जते बेले मेनू प्लान प्रिपरेशन करछन्ते ए भले मेनू प्लान हमर कहार मध्य रहुने तो सबु बेले जते बेले आपण देखंतो गोटे खाद्य रे निहाती तो व्हाइट कलर रहिबा दरकार व्हाइट कलर पे आपण एई दर आपण सुजी नियंतु किबा आपणकर सेई सिमिया नियंतु चूड़ा नियंतु किबा चावल नियंतु किबा गहम नियंतु किबा रोटी नियंतु ए सबु को आपण रखिबे मिनिमम आपणकर 30 रू 40% ताटू एक्सीड करिवे नाही आउ रेस जहां रहिला 30% आपणकर हेल्दी फैट्स खाद्य रे रहबा दरकार जोटा कि आपणकर आमे जानि नाहंती आमे बहुत सारा स्ट्रेस रे अफेक्टेड हमर स्ट्रेस तो दुनिया प्रकार पॉजिटिव स्ट्रेस नेगेटिव स्ट्रेस कहार को प्रकार स्ट्रेस व्हाट स्ट्रेस इज देयर तो स्ट्रेस पाई बोली आमे निहाती रूपे आमे माने जो भी आमे डाइट नौ चंती सबु बेले मल्टी कलर थिबा निहाती दरकार जेमति गोटे ग्रीन कलर ही थिबो गोटे येलोइश थिबो निहाती खाद्य रे गोटे आपणकर जितबे हां कोंतो पचरंतु मिलन बाबू पचरंतु कोन कहउचंतु मिलन सर पचरंतु मु सुनु छी हम क्लास को आगे नेबा जल्दी जल्दी कहंतु जहा कगर अछि मैडम कंटिन्यू करन तर बोध नेट आछनी ओके हां तो ए हमको निहाती रूपे डाइट रे से भले शामिल करबा दरकार आपण जदी ग्रीन कलर कथा कहबे मैडम सब तक जो हमें सब्जी वगैरह बनौछि मैम वन क्वेश्चन इज कि हम खाइला पर किछि लोक कहंती जे गैस होउछि हाँ सुनंतु हाँ जो मानकर भी कौन सी प्रकार एपीडी प्रॉब्लम अछि एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर दैट मे बी गैस्ट्राइटिस हो पेप्टिक अल्सर हो ड्यूडेनल अल्सर हो किबा आपनकर कॉन्स्टिपेशन हो किबा हार्ट बर्न हो एनी काइंड ऑफ गैस रिलेटेड प्रॉब्लम रे आपण फास्ट प्रोहिबिट करिवे सुजी खाइबा पई सुजी सिमिया मैदा वाला प्रोडक्ट माने रखंतो ए रिफाइंड सीरियल्स को तांको फास्ट बंद करिवे बिकॉज सुजी जतलो आपण खाइबे तो रिफाइंड सीरियल्स ए बॉडी रे टोटली आपनकर डाइजेशन प्रॉपर्ली हे परिबने एवं हार्ट बर्न माने अधिक माने खाली जे इंडाइजेशन होबनी हार्ट बर्निंग भी होबो एंड आपनकर फ्लैक्चुलेंस टाइप रो पेट फुले की मध्य रहबो एटा बिल्कुल से माने पई कंट्रा इंडिकेटेड तो जो तीनटा जिंस रे इम्बैलेंस रे सब तक डिसऑर्डर होची जेमति कहले आपनकर ग्लूकोज इम्बैलेंस रे आपनकर डायबिटीज मेलाइटस हो किबा आपनकर ओबेसिटी हो किबा हार्मोनल इम्बैलेंस जो प्रकार डिसऑर्डर से होची आपनकर ग्लाइसेमिक इंडेक्स ब्लड रे आपनकर बढ़ी जाउची जेतबेला हम रिफाइंड सीरियल्स ज्यादा नौचंदी जेतबेला आपनकर ग्लूकोज इम्बैलेंस बॉडी रे होची सेकंड जिंस होची हमर माइक्रोबियल इम्बैलेंस होची जदि हम बाहर सब बेले टिके टिके जिंस रे हम मेडिकेशन उडा को जो नौचंती स्पेसिफिकली एंटीबायोटिक्स एंटीवायरल एंड एंटी फंगल ए तीनटा जिंस अदरवाइज आउ सब जिंस को ए जिंस उडा खाइला फल रे हमर जो गुड बैक्टीरिया मध्ये बॉडी रे कमी जाउची जहा फल रे हमको आगो को जाय कि आउरी बहुत मेजर डिसऑर्डर द्वारा आक्रांत होबा पे होची थर्ड थिंग्स इज हार्मोनल इम्बैलेंस केमिति होची बॉडी रे हार्मोनल इम्बैलेंस आपनकर सब तक रोग जदि गोटे पिला प्रॉपर्ली डेंगा हे पारुनी किबा गोटे पिला अधिक डेंगा हेउछन्ते बहुत जण ताको बापा मां ठीक थांती डायबिटिक नॉन डायबिटिक थांती बट पिला को डायबिटीज हे जाय ए सब मुख्य कारण होची हार्मोनल इम्बैलेंस रो मुख्य कारण होची हमें आजिकली जहां भी खाद्य नौचंती प्रोटीन रो चक्कर रे पड़ी कि हमें डेली बेसिस रे हम कोन करचंती आपनकर गाय क्षीर हो छेना हो दही हो किबा पनीर हो किबा ए सब डेयरी प्रोडक्ट ऊपर हम संपूर्ण रूप से डिपेंड करचंती जो डेयरी प्रोडक्ट नौचंती या जो प्रोटीन रो चक्कर रे पड़ी कि हमें जो मार्केट रे जो मिलुची आपनकर बॉयलर जो चिकन जोड़ा मिलुची आपण माने कोन करछन से चिकन मेणी खाउचंती किंतु आपण चिंता करंतु सेटा केते दिनी रे को प्रकार से मानकर गाय रो अधिक मिल्क प्रोडक्शन हबो बोली ताको ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दिया हे थाए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन माध्यम रे से 2 लीटर क्षीर दबा जगह रे से 20 लीटर क्षीर दिए एंड सेही हार्मोन लागे ही तार मिल्क प्रोडक्शन इजैकुलेशन ज्यादा हुए आमे कोन करंती आमे सेही मिल्क को आनी की नियंती जेतबा आमे हम शरीर को नियंती सी हम शरीर को प्रकार हार्मोनल इम्बैलेंस करे मते कोन तो
आगुरु केबे देखिथिले माने को झियो मानकर निश थिबो को माने झियो माने सेविंग होथिबे को झियो मानकर मुह सारा ज्यादा से पिंपल्स है कि पीरियड एते इरेगुलर एते इनफर्टिलिटी आगुरु एते नथिला किछि 100 रु केस रु 5-7 केस थिला आजिकले देखंतु मॉडर्न मेडिकल साइंस बहुत आगु को जाईछि बट इनफर्टिलिटी केसेस मध्ये बढ़े ड्यू टू दिस हार्मोनल इम्बैलेंस ओनली तो हमको फर्स्ट रूट लेवल को जाई कि हमको कौन करिया पे पड़ियो मॉडिफाई करिया पे पड़ियो हमको हमर मेनू प्लान को हम जहां भी मेनू प्लान आपण माने रखंतु सब बेले हम ता माने म कहूनी आपण खीर खाइबेनी खीर खाइया पे कहबे बट हमें कौन करबा गुड मिल्क जेमति कि आपण कर जति गां रे रहउछन देसी खीर नियंतु कि हम तो खीर जतल आपण किनुछन से ब्रांड को अधिक देखंतु को ब्रांड रो खीर नेले जति कि अधिक किछि मिलावट नथिबो देन चिकन जगह आपण चिकन न नै कि आपण को देसी चिकन जोडा मार्केट में मिलछि ताकू मध्ये आपण नै परिबे चिकन रो रिप्लेसमेंट रे आपण चुना माछ नै परिबे चुना माछ पय कि एते सारा इंजेक्शन दिया न कि एते सारा प्रिजर्वेटिव दे कि ताको रखाय न बिकॉज़ सेटा एते समय एते सारा हबनी आ सेटा देले मध्ये सेटा शीघ्र नष्ट हे जिवो तो सिलेक्शन ऑफ फूड इज आल्सो बहुत बड़ा फैक्टर हैला बुझियला मुझे कहले यस मैम 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 ताले को जिनटा जो आपण कहले कारण पिलांकर चॉइस होउची मैक्सिमम चॉइस जोटा आपण कहले बयतर सेई थरे तो से ता बदले आज चुना माछ दोजे तो केमते कोन से जगह केमते मैम हमें कंप्लीट सारीबा खाया कुछ मांगो दो हां हमें चिकन आजिकल पिला माने चिकन चुना माछ हमर खाउ ना बजट अगेन हमर से जो हमर टॉपिक डिस्कशन चलची बजट को देखि कि हमको चिकन ता बहुत सस्ता एंड गैस जदी हमें देखिबा सी भी बहुत कम खर्च रे हे जीवो चिकन आपण रोसे करे 15-20 मिनिट चिकन माने कंप्लीट हे जीवो इकोनॉमिकली मध्य किंतु हेल्थ वाइज केते भलो तो आपण बीइंग ए न्यूट्रिशनिस्ट आपण कोन करिवे से चिकन रो रिप्लेसमेंट रे आपण देसी चिकन को जदी हम सप्ताह को 4 थर आणुथिले घर को तो एटलीस्ट हम गोटे थर वीकली आनिबा कोन आनिबा मटन म कहूनी सेही देसी चिकन को आनिबा जदी नाही केबे केबे छुआ तो बट जदि किछि हार्मोनल इश्यूज रहउची जो माने स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस माने कर जेमति कि माने हार्मोनल बहुत सारे इश्यूज आजकल वेरी कॉमन बहुत सारा पेशेंट आस्ता होचंती से माने को सेही टाइप रो तो जदि आपण घरे एई टाइप रो किछि केसेस पाउचन तो सेही समय आपण स्पेसिफिकली एई सब जिंस उडा को डाइट रेस्ट्रिक्ट करंतो आकु छाडी के आ बहुत सारा जिंस अछि बुझि पाले हमें खीर कहले हमें खाली भाबंती जे खाली गाय खीर रे ही प्रोटीन अछि बिल्कुल से नुह गाय खीर को छाडी की मध्य आपनकर 5-7 प्रकार खीर अछि आ जो खीर ओडा की आम बॉडी बहुत भलो से तको एब्जॉर्ब करिवो एसिमिलेट करिवो एक्सक्रीशन करिवो एंड सेइतरे बहुत भलो प्रोटीन अछि एंटीऑक्सीडेंट्स अछि फ्लावोनॉइड्स अछि माने आम माने गाय खीर तो भी बहुत सारा न्यूट्रिटिव वैल्यू तार बहुत अधिका किंतु आमे सेटा केबे मध्ये यूज करी न थांती एबे रिसेंटली आपनकर कमिंग 11th मध्ये वर्ल्ड माने जातीय दुग्ध दिवस पालन करा से गोटे भलो एबे गोटे रहितिला हमर डिस्कशन बहुत सुंदर से सेठी सब खीर विषय से विषय आलोचना अछि छाडन से कथा हम टॉपिक को आसीबा opportunity for home production and processing the foods मु कहली ए विषय ऑलरेडी हमें माने हमें स्पेसिफिकली किछि जेमति ग्रोइंग वेजिटेबल्स पर्टिकुलरली द ग्रीन लीफी vegetables like the amarnath mint spinach coriander in your garden and preparing the jam jellies water tomato sauce tomato puree all kinds of squash and pickles papads at home save a lots of money in addition to improving the quality of the meals also the relative interest of the family in food and in other commodities eta bhi gote bahut vital point jote ki this is a very important factor in determining the emphasis on the quality of the food and the consequent expenditure on it then economy in food budgeting factors and principle कौन इकोनॉमी इन फूड बजटिंग फैक्टर्स एंड प्रिंसिपल mainly 3 important factors which can be bring economy in the food budgeting first one is the intelligent buying second one is the knowledge of nutrition and third one is your home production and processing जोटा कि आमे आगरो माने या पूर्वरु मु आपण मन से आलोचना करली होम प्रोडक्शन रे हमें किछि किछि किचन गार्डन करी कि किछि हमें सेथरु भी किछि हमें कलेक्ट करि दे परिबा एम हम निजरो ये को मध्ये हम सेव कर दे परिबे होम प्रोडक्शन मींस growing the foods item while processing means for the preparation of the foods item
to make it ready to eat. Very few of us produce the foods we consume, but most of us process nearly all of it. That and it's so in some cases na from the stage 1 आमे कौन करती जेमती कि आपनकर टमाटो केचप कथा कोंतु किबा नूडल्स कथा कोंतु पैकेज सूप हो किबा jams, jellies, pickles and instant dosa, idli, gulab jamun किबा bread, biscuit एवं अदर जो बेकरी प्रोडक्ट मार्केट जो केक वगैरह जहां मिलुची किबा क्लीन चिकन हो, क्लीन कट चिकन हो, ए सब जिंस सेउडा कोन होची ना रेडी टू मेड फूड फ्रॉम द केटरिंग रू जहा जहा हमें पाई थांती एटा को मध्य हमें होम मेड कर दे परिबा एथरे मध्य हमरे कॉस्ट इफेक्टिव बहुत कमी जीवो एंड एथरे मध्य हम बजट को हमें किछि कंट्रोल करी परिबा थर्ड जिंस सेकंड जिंस होची इंटेलिजेंट बाइंग जेतेबेला हमें फूड को परचेस करूचंती सेतेबेला को हमर टिकी हमर माने माइंड को खर्च करके जदि हमें किछि जिंस परचेस करबे ताले बहुत कांसर रे हमें हमर फूड बजट को कंट्रोल करि पारी बा जेमति कि प्राइसेस एंड क्वालिटी अवेलेबल इन डिफरेंट मार्केट अपन देखिथिबे जदि हमें गोटे जिंस को लोकली जोटा अपन कर जेमति हाट गोटे जतोला हमें गोटे हाट रो होलसेल मार्केट रो किनिबा आ वीकली मार्केट रो किनिबा ए भीतर बहुत डिफरेंस जदि वीकली मार्केट रो अपन किनिबे सेटा जत्ते चीप रे पाइबे आपण घर साइट रो मार्केट रो जदि किनिबे सेति की आपण पाइबे नाही सेमति होलसेल मार्केट रो आपण जति की चीप रे पाइबे वीकली मार्केट रो सेति की चीप रे पाइबे नाही तो आमे जेतेले भी इंटेलिजेंट बाइंग मींस प्राइस एंड क्वालिटी अवेलेबल इन डिफरेंट मार्केट तो से को मार्केट प्राइस रे जेते कम होची ताको सेही भलिया जिंस को आमे किनी की आम बजट को मध्ये आमे कंट्रोल करि दे परिबा एंड बल्क बाइंग इज वेरी चीपर म आपन कहिथिले जदि हमें चावल हो डाली हो किबा आपन को तेल हो ए सब कोन करिबा तेल जदि हमें दरकार हमें कोन करछंती हाफ किलो मार्केट माने घरे सरी गेला माने जाई कोठ हाफ किलो पाउच कोटे धरि के पळे आसीबा पुन सरी गेला माने 1 किलो धरि के आसीबा इट्स नॉट द प्रॉपर वे ऑफ बजटिंग ऑफ द फूड तो हमको कोन करिया पे पड़बे सब बळी आपन को जो माने टिके माने गुड ईयर सने निहात रूपे बल्क बाइंग को ही प्रिफर करंती आपण माने सेति पय जो भी कारण गोटे जिंस एटा सत्य जे खाइबाटा केबे मध्य हमर बंद हेई न थाई माने जहा भी बंद हे जाय एते बड़ कोविड पीरियड हैला बहुत लोकंकर रोजगार पंथा पूरा बंद हे गला किंतु आपण चिंता करंतु केबे भी गोटे दिन खाइबा बंद हेतिला कि बरम मु तो कहबी जते बेले हम कोविड रे थिले से समय खाइबा बहुत लोक आपण देखिथिबो ओबेसिटी हे गला ओवरवेट हे गला से समय बहुत लोक आपणकर जेंति डायबिटीज बहुत जन कर रह गला बिकॉज़ सेमानकर घरे बसिले ठीक अछि बट खाइबाटा कमिला नै तो मु कहबा कथा आपण जते बेले भी हमें फूड बजट कथा हमें चिंता करिबा तो इकोनॉमी विषय में चिंता करबे तो निहाती रूपे हमर खाइबार केबे बंद होबनी जेतरा हमें जे कोन सिंस परचेस करचंती ताको हमें ह्यूज अमाउंट एट ए टाइम किनिबा या कि हमको टिके चीप पड़िबो ज्ञान सर कोन सुनुचंती भल लागुची ना नाही क्लास आगे 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 मैडम आपण बोते सर आज फर्स्ट क्लास ना कोन याना को आपण कर आज फर्स्ट क्लास के नहीं नहीं मैडम बहुत पूर्व फर्स्ट क्लास कर लास्ट क्लास से थिले कोन नहीं लास्ट क्लास नथली मु फर्स्ट दि दिन थली किन तापरे गोटे दिन रहि चल देन आउ गोटे होची आपनकर सीजनल बाइंग इज चीपर मु सेटा आगु ऑलरेडी डिस्कशन करे छी सीजनल बाइंग जो सीजन रे जोटा प्लेंटिली अवेलेबल सेही जिंस को हमें किनी की ताको केंति प्रॉपर स्टोरेज करि परिबा एंड इन द मीन समय हम जेतो रिक्वायरमेंट आसे से समय हम ताको बाहर करबा बाइंग विथ ए डेफिनेट पर्पस इन माइंड एटा भी गोटे वाइटल पॉइंट गोटे डेफिनेट पर्पस इन माइंड ता माने कोन बुझचंती बाइंग विथ ए डेफिनेट पर्पस इन माइंड कोंतो गोटे स्पेसिफिक जिंसटा को माइंड रे सेट करके वर्क करबा एटा बहुत बढ़िया जिंस जहां भी हमें करूछंती प्रथम मेंटली हमें सेटअप करबा हम माइंड रे गोटे गोल सेट करबा तापर हमें ताको प्रोसीड करबा अवेयरनेस ऑफ द वेट एंड वॉल्यूम एटा मध्ये बहुत बड़ा जिंस अवेयरनेस ऑफ द वेट एंड वॉल्यूम that means in all packaged food product you will find net weight mentioned there and this is the weight of the actual food materials inside and does not include the weight of the package itself
तो आमे जेतबेले भी जो जिंस किणुचंती सेटा को गोटे अवेयरनेस सहित आमे देखिबा तार केते वेट एंड तार वॉल्यूम ता केते रहउची एंड नॉलेज ऑफ द ग्रेड्स ब्रांड एंड लेवल्स इट्स वेरी वाइटल बुझी पाले आपन को लेखा आइतिबो गोटे एंड आपन भीतर प्रोडक्ट थिबो गोटे तो सब बेले व्हाइल परचेसिंग एनीथिंग्स ना यू शुड बी very focused upon the knowledge of grades and the brands and the level is very vital and preparing the market list means what this means putting down on a paper food items that we need to buy प्रथमे ताको गोटे लिस्ट आउट करंतु जेमति कि हमरो कोन कोन नबार अछि सीरियल्स कोन पल्सेस कोन एंड आपनकर ऑयल बा ऑयल फूड रे बटर हो घी हो कि वनस्पति किंबा मिल्क डेयरी प्रोडक्ट रे कोन कोन चीज लेबे ना फिश या पोल्ट्री जहां भी आपनकर माने चॉइस वेजिटेबल्स लाइक आपण ओनियन पोटैटो स्वीट पोटैटो रूट एंड ट्यूबर नउचंती ना ग्रीन लीफी वेजिटेबल टी कॉफी जाम जेली पिकल पापड़ प्रथमे गोटे प्रिपेयरिंग ए मार्केट लिस्ट तापर आपण मानको से अनुसार आपण बजट ये करी कि किनिया पे ट्राई करंतो एंड अवॉइड अननेसेसरी बाइंग हमें कोन करिबा बेले बेले जरूरत टू भी ज्यादा हमें किनि दियंती एवं जोटारे कि आपनकर जेहेतु फूड गोटे जिंस एते सारा नै कि आस्तन जेमति माने कर एप्पल किलो बर्तन 80 टका हे जायछि आम घर पाई 5 जन मेंबर अच्छा आम घर पाई दरकार 3 किलो बट आम जेहेतु कॉस्ट बहुत कमी जाइए आम नहीं आसी एकाथरे 8 किलो कि 9 किलो किंतु तार सेतिकी दिन तार माने एफिकेसी एते लॉन्ग टर्म नुह जो शीघ्र नष्ट हो ताकू आम से नष्ट को बंचिया संगे संगे शीघ्र शीघ्र खाई समस्त अधिका खाईदे से अधिका खाई तो ये कौन डिस्ट्रेस इटिंग एंड से आपणकर किसी माने लाभ किसी नए से बरम आप लॉस है एट ए टाइम आम भावतुनि माने गोटे जिनस को अधिक अधिक क्वांटिटी कंज्यूम करते से आम बॉडी गुड इम्पैक्ट पड़े बिल्कुल से हाइपर विटामिनोसिस से लीड्स करे होम प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग एटा तो मैं आपको ऑलरेडी कहि देछि and next is the preparation of food budget means what किसके कहू चाहते पद्मजा मैम किछि कहू चाहते के नहीं मैडम हेलो किछि कहू चाहते नहीं मैडम कुछ कहो ओके I may be putting a preparation of the food budget. Preparation of the food budget means these plans of expenditure made with the help of the past experience, taking into consideration the present market price and trends. And the individual buying capacity is called as the food budget. Individual buying capacity is called as the food budget. Total plan of expenditure made with the help of the past experience, taking into consideration the present market prices and trends and the individual's buying capacity is called as the food budget. And the food budget may be a short-term food budget or long-term food budget. Short-term food budget means monthly food budget. Long-term means annual food budget. Short-term food budget is otherwise called as the monthly food budget, and long-term food budget is otherwise called as the annually food budget. What is short-term monthly budget? Short-term monthly budget means is the one a majority of us are most likely to prepare since most income is on a month basis. And short-term budgets are easier to prepare because expenditure on semi-perishable foods that can stay for some time without spoiling like the onion and the potato. This example of the semi-perishable food. And in small expenditure and जोड़ा को कि आमे बहुत कम दिन रे नष्ट हो जाय जेमति कि आपनकर खीर दही माछ मांस एगुडा को कोन सेगुडा को आपनकर तो बाहर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर कोन रखिबे गोटे दिन परे तारो स्पॉइल होबा आरंभ होय सेगुडा को होछ आपनकर पेरिशेबल foods and foods that spoils rapidly like the meat or poultry leafy vegetables and cod all these things a weekly or even a daily expenses the monthly budget takes into account the expenditure to be incurred on monthly basis plus the daily and weekly expenditure and expenditure on the so called non perishable foods for example hoche apan manankar jota ki different types of cereals and the
pulses also. Cereals, pulses, sugar, eguda hochi apana non-perishable foods. And the long-term annual budget is the forecast of our expenditure on foods and the money available for it during the coming year. It would include the annually purchase, if any, plus the monthly expenditure on food for the 12 months. And it tells you that what to expend on foods is likely to be for the coming year. This is very helpful since in the case of unexpected expenditure, you have the time and opportunity to perhaps make suitable adjustment by reducing the certain foods expenditure, which you can do without. For example, not freezing peas for the years, one can after all do without eating peas or making less pickles than one usually does. And while I already discussed about the short-term food budgeting and the long-term food budgeting. এবং କୋ food budget ରେ ଆମେ କେମିତି କଣ କରିବା, perishable food କଣ, non-perishable food କଣ. मैम एक्सक्यूज मी मैम मैम हाँ। आपण जो गुडाक टॉपिक गुडाक सारुछंती तो तार जो एक्सरसाइज गुडाक अछि से गुडाक सब हमें फिनिश कर देथबो। हाँ କରିଥିଲେ ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ materials ନାହିଁ ନା ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛନ୍ତି नहीं मैम ଆପଣ ମାନେ materials ସବୁ ଗୁଡାକ DNH ର materials ଗୁଡାକ ପାଇ ଯାଇଛନ୍ତି କି? आज्ञा मैडम ନାଇଁ ନାଇଁ No ma'am, ପାଇନୁ। Yes, ma'am. नो मैम नो Bye. So, ପାଇନୁ आई 90% ପିଲା ପାଇନାହାନ୍ତି। 90% ପିଲା ପାଇନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ହଁ ଯଦି ଯୋଉମାନେ ନ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ରିଜନାଲ ସେଣ୍ଟରରୁ କଲେକ୍ଟ ଆପଣ ବୁଝି ସାରିଲେଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ କି ନ ଦେବେ ଯଦି ନ ଦେବେ ଆପଣ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ତାଠୁ ଆପଣ କଲେକ୍ଟ କରିକି ମାନେ ଯାହା ବି ପଢା ହଉଛି ତାକୁ ଟିକେ ଘରେ ପଢିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡାମ ନ ଦେବେ କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା मैम एक्चुअली एक्स्ट्रा Sensitive ଅଛି କି? पेमेंट एक्चुअली ହଁ हमठू हमको ये करथिलु तो एपन तो सेटा पाइनु। ତ ଆପଣ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ବାବଦରେ ଆପଣ କୋଡିଟ୍ କରନ୍ତୁ ନା ସେଣ୍ଟର ସହିତ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ କଣ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି କି ଯଦି ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଥିବ ଆପଣ ଯାଇକି କଲେକ୍ଟ କରିନେଇଆ ସେମାନେ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କରିବେ କାରଣ କ୍ଲାସ୍ एक्चुअली दूसरा हम जाई रिटर्न करके आसु ସେମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ସେମାନେ ସେମିତି ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ମିଳିବ ଏମିତି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ଦେଖିବା ଏମିତି ଡିଲେ କରୁଛନ୍ତି। କହିପାରିବେ ନିରୁପମା ମ୍ୟାମ୍ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ମେଟେରିଆଲ୍ସ ना मैम ଆଉ नहीं ପଦ୍ମଜା हो ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ମେଟେରିଆଲ୍ସ वो रिजेक्ट ଅଛି ଆଚ୍ଛା ସେ ଆପଣ କଣ ଇଗ୍ନୋ ପାଇଥିଲେ ଆଉ କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲେ? ହଁ ମ୍ୟାଡାମ ଇଗ୍ନୋ ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟର ମୁଁ ଯାଇକି ଆଣିଥିଲି ଆମକୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ମିଳିଗଲାଣି। मैडम मैडम मैडम, मुते भी सही अक्टोबर मास रो मिली गेलानी ମୁଁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ଆଣିଲି। ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ସମୟ नहीं ସେଥିପାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇ ବାବଦରେ ତ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ଆପଣ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ଅରିଜିନାଲ ସେଣ୍ଟର ସହିତ କନେକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯଦି ବି ନ ହଉଛି ଆପଣ କଲେକ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ବି ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଅଦରୱାଇଜ ଯଦି ଫିର ବି କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ସେସନ ପରେ ମୋ ସହିତ ଇଏ କରନ୍ତୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଯଦି କିଛି ହେଇପାରିବ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ଟ୍ରାଏ କରିବି ऑनलाइन केमती କରିବ मैडम एक्चुअली ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସାରନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଡିସ୍କସନରେ ରହିଯିବା ଆମେ ପାଠ ପଛେଇଯିବ ୟୁନିଟ୍ ପରେ ପଛରେ ପଡ଼ିବେ ଜଲ୍ଦି ସାରନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? मैडम ई कनेक्ट जो ऐप अछि सेटारो डाउनलोड करके समस्त करि परिबे वर्तमान टेबल परंतु फिजिकली बही न मिली से ई कनेक्ट जो ऐप କଣ କହିଲେ ସାର୍ କଣ हमर जो ई कनेक्ट बोली की गोटे ऐप अछि आज्ञा से आज्ञा ऐप रु डाउनलोड करके समस्त पढ़ि परिबे। अच्छा ଜ୍ଞାନ ସାର୍ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସମସ୍ତେ ଶୁଣିପାରିଲେ ସେୟା କରନ୍ତୁ ସେ ଆପ୍ସକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ମେଟେରିଆଲ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଯଦି ହେଇପାରିବ କରନ୍ତୁ।
जदि मैडम नाही किछि समस्या होछि ताले मते मैडम निहाती कहि पारे। मैडम मु गोटे सजेशन चाहूँगी आपन मु कहली जदि जो माने ई कनेक्ट रु जदि माने डाउनलोड न होई पारुची जो माने मटेरियल पाई सारिचंती से माने जदि ग्रुप माने व्हाट्सएप ग्रुप रे जदि पिक उठेई की छाडिले सेटा भी तो कवर करी हबो। एक्चुअली मैडम आमे समस्त भी सेटा के फॉलो कर पारंतु। कोन कहउचंती मु सुनिनी कहले अथरे। मैम एक्चुअली जदि ई कनेक्ट रु हमें डाउनलोड मने करो न करी ନାଇଁ पारले ଡାଉନଲୋଡ तो ହବ जो पिला माने पाई जाइचंती ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଇଟା जो ହଉଛି जो पिला माने पाई जाइचंती हम्म फॉर द टाइम बिंग व्हाट्सएप ग्रुप रे जदि पिक उठेई की छाडिले भी से पेज रो माने कवर करी हबो। ଏତେ ପେଜ କରିବା ସମ୍ଭବ ସେଟା ବି ନୁହଁ ବହୁତ ଭଲ ସଜେସନ ଦଉଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ତ ସେମାନେ ମାନେ କଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ ପାର୍ଟ ନା ଏକ୍ସରସାଇଜ ପାର୍ଟ ନାଇଁ ନା ନାଇଁ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ପଢା ପୁରା ହଉଛି? ୟୁନିଟ वाइज ଆପଣ ଛାଡନ୍ତୁ ଖାଲି ଆରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ର ବାପରେ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଯାହା ରହିବ ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ଆଚ୍ଛା ସର୍ଟ क्वेश्चन एंड छोट छोट वाला ସେଇଥିରେ କିଛି ହବନି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଇଗ୍ନୋର ଯୋଉ क्वेश्चन ଆସିବ एग्जाम रे पूरा लॉन्ग क्वेश्चन वाला ଆସିବ ତ ଆପଣ पूरा यूनिट वाइज ଯଦି होଉଛି जो जो यूनिट जो जो डिस्कशन होଉଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଯଦି ପିକ୍ ଦେଇଦେବେ ତ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ବେନିଫିଟ ହେଇପାରିବେ ଓକେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଏବେ ଆରେ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ ବାପରେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଟିକେ ଆଜି ଟ୍ରାଏ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତୁ ଇ କନେକ୍ଟ ରୁ କରିବା ପାଇଁ ନହେଲେ ଆମେ କାଲି କ୍ଲାସ ରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ସେଟା ଓକେ ହେଇପାରିବ ଆମକୁ ମାନେ ଆରାମ ଟାଇମ ରହୁଛି ମୁଁ ପଳଉଛି ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଲାସ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରିଛି ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରିଛି ସେମାନେ ଇ କନେକ୍ଟ ରୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ପଢୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ थैंक यू सर तो देखो ज्ञान सर तो कहते आपण मैंने से कनेक्ट करंतु एवं से ऐप्स को डाउनलोड करंतु जदि सेइथि भी आपनकर हेइ जाउची बहुत भलो कथा जदि न ହଁ होची ମ୍ୟାଡାମ समस्या ଇ कनेक्ट ରେ आସୁଛି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିଛୁ अच्छा सुनंतु मु ଆସୁଛି बार बार कहूची आपण एई सब प्रोसेस रे ट्राई करंतु जदि न हबो ताहले मते फाइनली कहंतु मु ओके मोदर जहा हे बिल्कुल मु करबे ओके से सिंस को हमें एक क्लास ले हे जाउची आपनकर ओके ओके मैम I already discussed about the preparing long-term annual food budget in the long-term food budget. Now, the estimated monthly expenditure on the foods for the 12 months and the annual expenditure related with the foods like the jam, jelly, squash, and the tomato sauce pickles like that, and festivals and the other occasion like the anniversary, birthday during the year, we as a family celebrate and the expenditure on the food incurred because of them, and unexpected situation and guest which increase the expenditure on the food. It's very common. Then next one is the food selection. Selection of the food is very important. The selection of food, selection of the different types of cereals, selection of the roots and flavors, selection of the fats and oils, selection of sugar, jaggery and other sweetening as well, and selection of the bodybuilding foods that may be pulses, milk and dairy product, and flesh foods like meat, poultry, egg, fish, and other seafoods also. And selection of the nuts also. First, I will discuss about the selection of the body. Sorry, energy giving food. कोटा हमारे हम already discuss करी थी कुहतु कुहतु किसी तो इंटरेक्शन हुआ दरकार क्लास एनर्जी कीपिंग कोड हमें कोथरु पठाओ तेल घिओ लक्ष्मी प्रिया सुगर तेल घियो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कीपिंग वी आर गेटिंग फ्रॉम द ओनली तेल घियो कार्बोहाइड्रेट्स मैम सुगे देन मैम जैसे सुगर कार्बोहाइड्रेट लक्ष्मी खाद्य प्रिया जो मैडम कौन तो राइस हो गला राइस हो राइस गला व्हीट हो गला सीरियल्स मैम मैम रूट्स एंड ट्यूबर्स बनाना जोटा का मैडम एनर्जी ओडिया रे गिविंग कहबा फूड श्वेतसार जातीय खाद्य सेतरे हमको एनर्जी गिविंग फूड very मिले good root and tubers cereals and all the carbohydrate rich food wheat rice joa bajra and ragi हाँ हाँ सेवड़ा होची हमारा एनर्जी गिविंग। The selection
of the energy giving foods. Different types of energy rich foods items like all the root and tubers and jaggeries, sugar, oils, fats, and all kind of cereals also. Uh, Main first selection of the cereals. Cereals means the word cereals is derived from the cereals. The Roman word was believed to be the product of grains. The term cereals means example ଆପଣଙ୍କର ବାଜରା हो, ବାଲି हो, ରାଗି हो, rice, wheat, cereals, jowar, maize, and rice cereals. So the bajra and jowar, ragi, coarse cereals are referred to as the millet. ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି millet କଣ? ଆଜ୍ଞା ମାଣ୍ଡିଆ 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 ବାଜରା What is millet? ଏଗୁଡାକୁ ସବୁ ମିଲେଟ୍ କୁହନ୍ତି। ମିଲେଟ ଏତେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମିଲେଟ ସବୁ କିଛି ଚାଲିଛି ତ ମିଲେଟ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା? ଚାଉଳ ଯାହା ଏଗୁଡାକୁ ମିଲେଟ କହନ୍ତି। ମିଲେଟ No, କହିଲେ ଆମେ ma'am. କଣ ବୁଝିବା? Is millet is more nutritious than that of the rice and wheat? yes ma'am स्वरूपा पंडा सर କୁହନ୍ତୁ। स्वरूप सर କହିଲେ complex carbohydrate ଆମ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ and millet ରାଇସ୍ ଏଣ୍ଡ ହ୍ୱିଟ୍ ଇଜ ଭଲ ନା ତାଠୁ ବେଶୀ ଅଛି ମିଲେଟ? ମିନରୀ millet ମ୍ୟାମ୍ ମିଲେଟ୍ ଭଲ, ମ୍ୟାମ୍ ବେଶୀ ମିଲେଟ୍ ଭଲ। ବହୁତ ଭଲ କଣ ପାଇଁ ରାଇସ୍ ଠାରୁ। millet ମ୍ୟାମ୍ ସେଟା better ହାଇ ଆଇରନ୍, whether କ୍ୟାଲସିୟମ୍। millet or rice and wheat? ହଁ Millet. ମ୍ୟାମ୍ Why? ମ୍ୟାମ୍ ମିଲେଟ୍ Why? ବହୁତ ରିଚ୍ ଥାଏ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଉପରେ, କାହିଁକି ନା millet is a ସେଥିରେ complex ଆଇରନ୍, carbohydrate କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଫସଫରସ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ବହୁତ ସାରା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଥାଏ, ଯୋଉଟା ରାଇସ୍ ରେ ଓନ୍ଲି ଫର୍ କାର୍ବ ସେଟା ଥିବାରୁ ମିଲେଟ୍ ଟା ବେଷ୍ଟ। ରାଇସ୍ ରେ କଣ ନଥାଏ? ଏସବୁ ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ନଥାଏ? ma'am millet is a complex carbohydrate ଅଙ୍ଗରୀ ମ୍ୟାମ୍ କୁହନ୍ତୁ ରାଇସ୍ ହ୍ୱିଟ୍ ରେ ଏସବୁ ବୋଧେ ନଥାଏ ଆପଣଙ୍କର high ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ? content of iron and fiber ରାଇସ୍ ରେ ଥାଏ ହିଁ ନାହିଁ? ରାଇସ୍ ରେ ଥାଏ ହିଁ ନାହିଁ? yes ଭିଟାମିନ୍ ଡି ma'am ଅଛି ନା ନାହିଁ ରାଇସ୍ ରେ? କୁହନ୍ତୁ। ମ୍ୟାମ୍ ମିଲେଟ୍ ହଉଛି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ। ଏଇଟା ଖାଇଲା ମାନେ ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଗ୍ଲୁକୋଜ ଟା ସିକ୍ରେସନ ହୁଏ ଆଉ ମୋର ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏନର୍ଜିଟା ବଡିକୁ ମିଳେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମିଲେଟ ଟା ଆମର ମାନେ ରାଇସ୍ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ଆମ ବଡିକୁ ଦରକାର, କାରଣ ରାଇସ୍ ରେ ଇମିଡିଏଟ ଗ୍ଲୁକୋଜ ସିକ୍ରେସନ ହୁଏ। ମିଲେଟ୍ସ ରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇକି ଆମର ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଟଟା ଭର୍ତ୍ତି ଲାଗେ, ସାଟାଇଟି ଟା ବଢିକି ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମିଲେଟ ଟା ଦେହ ପାଇଁ ବେଶୀ ଭଲ। ମ୍ୟାଡାମ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ମତେ ଜଏନ୍ କରିବେ।
हेलो मैडम सार मान को मुझे पचारि आमर कौन किसी ग्रुप आपण मैंने करछंती कि व्हाट्सएप ग्रुप हेलो अमित सर कि ज्ञान सर कि मिता मैडम किए कहबे मो ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍ କିଛି ଗ୍ରୁପ ହେଇନି। नहीं ନାଇଁ yes ମ୍ୟାମ୍ yes yes କିଛି madam ନମ୍ବର ହେଇନି। group ହେଇଛି ମୁଁ group ବନେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ link forward କରୁଛି ग्रुप ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ forward नंबर टा କରୁଛି टिके ऐड करिवे ए सार ए जो आपण इग्नोर तरफरु गोटे ग्रुप आसीछि व्हाट्सएप रे सेइथरे ही हम ऐड हेचु सेटा हाँ मेसेज आस्तला ईमेल थ्रू तो रे ये आम कहूले ना वो ये मैडम आमर मितांजलि देवी से मैम कहते बहुत बढ़िया कथा कहले अच्छा जहाँ आप कहते ये वेरी स्लोली ग्लूकोज रिलीज करे जो कि आप ब्लड रे इंस्टांटली आपंकर ग्लूकोज सेंसिटिविटी बढ़ी न थाए एंड बॉडी रे मध्य ग्लाइसेमिक इंडेक्स एते शीघ्र बढ़ी न थाए जोटा कि आपंकर कहबा कथा हला जे ग्लूकोज को मेंटेन करी करी थ्रू आउट द डे आपको ग्लूकोज को मेंटेन करे ब्लड रे कौन पाए जो मिलेट नौ सब जिन पॉजिटिव होची कौन पे व्हीट हो कि राइस रे हुए ने बट मिलेट हुए कौन पे व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट मितांजलि मैडम आपन को कहूची आपन बहुत सुंदर से आंसर देले जे कोन पे एमती एटा होची रीजन कोन काहे कि मिलेट रे एमती कोन अछि जे एटा खाइले हमर ब्लड रे इंस्टेंटली ब्लड रो ग्लूकोज लेवल बढ़ुनी या ग्लाइसेमिक इंडेक्स को ये बढ़ुनी एवं ग्लूकोज सेंसिटिविटी को मध्य बढ़ुनी आपन कहबार मतलब थिला पूरे थ्रू आउट द डे इट विल मेंटेन आवर ब्लड शुगर लेवल व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट मैडम एटा गोटे होची कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जेहेतु कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एटा जल्दी ग्लूकोज सिक्रेशन हुएनी आर जदि जो जदि मिलेट व्यतीत बहुत सारा कॉम्प्लेक्स कार्ब अछि सब कॉम्प्लेक्स कार्ब रो कोन एई नेचर ना मिलेट रे आउ कोन अछि जोटा कि एमती करि थाए बिकॉज मिलेट्स मिलेट रे बेसिक आपण मानकर ज्यादा इट कंटेन्स द रिचेस्ट सोर्सेस ऑफ प्रोटीन फाइबर मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट इज देयर स्पेसिफिकली हाई amino acid भी अछि मैम जेते बळे आपण माने राइस खाउचंती जो 100 ग्राम्स राइस रे तळ आपण 1 ग्राम रे पाउचंती फाइबर एंड व्हीट रे ताटू अल्प टिके कमी की 0.6 to 0.7 ग्राम आसी जाय आपण को फाइबर जोटा कि माने वेरी करे डिपेंड करे आपण को चावल को खाद्य रे इनपुट करचंती जेतळ हम मिलेट नउचंती millets को again categorize ହେଇଛି there are mainly 3 types of millets is available in the market first one is the positive millet negative millet and the third one is the neutral millet positive millet means the millet which contains more in 100 grams of millet if it is contains more than 11 grams of fiber 8 to 10 grams of fiber then it is called as the positive millet if in the millets it contains 7 to 5 gram of fiber in the 100 grams of millet then it is called as a negative millets and जोटा आपनकर न्यूट्रल मिलेट एटी नॉर्मली जति की फाइबर रहबा कथा रुहे तो ड्यू टू द हाई फाइबर ऑफ द मिलेट्स इटा कोन करे नॉट ओनली मिलेट्स कंटेन्स द हाई फाइबर along with the high fiber it also contains the rich sources of other oxidant and that other micronutrient is also there. It's very good for the maintenance of your blood glucose level. Not only it maintain your blood glucose level, it also very good for the strengthening of our all the system of the body. Okay. The selection of cereals is very vital and in the second excuse me ma'am हाँ what excuse me ma'am ma'am टिके आपण सेटा टिके कोंतु जो पॉजिटिव मिलेट रे को आइटम रहउची आपनकर नेगेटिव मिलेट रे माने जेंती रागीटा पॉजिटिव रे जीवो ना नेगेटिव रे जीवो मैम की धर न्यूट्रल रे जीवो हाँ सुनते फर्स्ट थिंग है पॉजिटिव मिलेट आमे ताको एथि पई कहबा बिकॉज़ जेते बळे आमे अदर कोनोसी भी आमे माने जो भी आमे सीरियल्स बा व्हीट प्रोडक्ट जहाँ भी नउचंती ना पॉजिटिव मिलेट जोतरे कि जदि 100 ग्राम्स मिलेट रे मोर देन 11 to 12 ग्राम्स ऑफ जदि प्रोटीन रहउची ताहले आमे ता कहबा पॉजिटिव मिलेट्स
ଆଉ जो 100 ग्राम्स मिलेट रे जदि आपनकर 7 to 8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन कंटेंट पॉजिटिव मिलेट न्यूट्रल मिलेट होची आपनकर भात रोटी माने राइस कंसीडर न्यूट्रल मिलेट एंड दैट मेज इज आल्सो ए न्यूट्रल मिलेट रे जीवो पॉजिटिव मिलेट होची आपन मानकर जोटा कि आपनकर कोडो मिलेट होते ग्राउंड अप मिलेट होते फॉक्सटेल मिलेट होते आ बस ए गुडा को होची अपन पॉजिटिव मिलेट ताकू मिलेट रो गोटे थरा मो सेशन नेबी से दिन मो आपन को डिटेल्स पूरा कहबी एंड ईच एंड एवरी मिलेट रो बॉडी पे इंपैक्ट बहुत अलग अलग एंड स्पेसिफिकली को डिसऑर्डर रे हमें को प्रकार मिलेट को रेकमेंड करबा सेटा माने एमिति न हो जे जदि मनकर कोडो मिलेट इज वेरी गुड फॉर द प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशनल पीरियड एंड ड्यूरिंग द डेंगू केसेस आल्सो जितबे बॉडी रे प्लेटलेट कमी जाउतबो तो डेंगू केस रे मध्ये हमें दे परिबा कोडो मिलेट एंड स्पेसिफिकली जो मनकर ब्लड कार्सिनोमा ब्लड रो माने ब्लड कैंसर हेतिबो सेमानक पई मध्ये कोडो मिलेट भलो बुझियला तो हमको स्पेसिफिकली थेराप्यूटिक मिलेट रो यूजेस रहिछि माने ए मिलेट को हमें माने फॉक्सटेल मिलेट को हमें जो केसेस में दे परिबा सेटा नुह जे हमें अदर केस से मध्ये से फॉक्सटेल मिलेट देबा पर्टिकुलर डिजीज स्पेसिफिक मिलेट इज देयर तो अलगा अलगा मिलेट रो अलगा अलगा रोल हम बॉडी पई रहिछि तो नाउ हमें अगेन हमें टॉपिक को आसी जीवा तो द सिलेक्शन ऑफ cereals is very important selection mainly cereals largely used in our country as a rice and wheat I mean generally हमें 100 to 80 items हमें खाइता तो only it is made from the wheat and rice and jowar bajra that ragi rice barley एवडा को बहुत कम परिमाण रे नै तांती barley is a very good sources of boric acid मने रखंतो एटा समस्त को सब बेले ही दरकार तो बार्ली निहाती रूपे हमरो जो मनकर एनी काइंड ऑफ फीमेल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो या मेल यूटीआई मेल पर्सन मनकर मनकर जति यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होची फॉर बोथ ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द फॉर द मैनेजमेंट ऑफ यूटीआई केसेस ना that barley is very good for them because barley contains the richest sources of boric acid अपन जितने सारा फूड सोर्सेस देखंतु सब अपेक्षा बार्ली रे बहुत ज्यादा था बार्ली रे जो एंटीऑक्सीडेंट्स फ्लावोनॉइड्स थाई जोटा कि स्पेसिफिकली अपन को यूटीआई केस पे बहुत इफेक्टिव हे थाई and mainly that barley rice wheat jowar bajra and ragi rice wheat are classified as the fine cereals but जोड़ा कि बड़ा बड़ा माने मोटा मोटा दाना वाला जेमति बाजरा कोंतु रागी कोंतु jowar कोंतु जोटा कि खद खदडिया हाथ को लागे एवं टिके माने मोटा वाला दाना ताको हमें कहबा मिलेट वाली and specifically wheat first selection of wheat is very vital during the purchase of the wheat ना हमें प्रथम देखंतु आपण wheat रो बहुत सारा जिंस हमें सेत्रु पाउचंती जेमति कि आपणकर जहां भी खाद्य प्रिपरेशन ब्रेड कथा कोंतु किबा बिस्किट्स कथा कोंतु किबा केक कथा कोंतु किबा पेस्ट्रीज कथा कोंतु चपाती कथा कोंतु ए सब तक जिंस मेड होची हमर कोथरो wheat रो तो wheat को हम सिलेक्शन करके परचेस करबा होची बहुत बड़ जिंस एंड wheat रे गोटे बहुत बड़ प्रोटीन भी थाए the stretching quality of wheat flour and that consider the mainly एठी जो देखिथिबा आपण माने अट्टा को जितबे हम पानी दे किछ समय रखी देथिबा तापर हम चक्कटीबा देखिबा कोन हाथ को गोटे स्टिकी हेके लागिवो इबिन हमें आउटी कि जति पछको मु पळेबी जितबे अट्टा नथिला माने अट्टा त थिला बट आगे हमें पूर्वे जितबे हमें गणेश पूजा या सरस्वती पूजा जितबे हमें सेलिब्रेशन करूथिले स्कूल मानकर मन पकांतु से समय रे कोन करथिले मैदा अट्टा रंधा है कि पताका लगा हुए एक्जेक्टली तो सेईटा मध्ये कोन माने स्टिकी इन नेचर तो आमे देखंतु आमे जो डाइट को आजिकली खाउचंती जो भी अपन खाद्य कथा कोंतु दैट मे बी आपनकर पास्ता हो किबा नूडल्स हो किबा आपनकर केक हो किबा आपनकर बिस्किट हो ए सब जिंस देखंतु टिके पानी रे ताको भिजे के रखि दियंतु से कोन होउची ओटा अट्ठा ग्लूटेन फॉर्मेशन कर दोची ओटे जस्ट लाइक ए स्टिकी इन नेचर ठीक होची ना भूल होची ठीक होचनी मैम ठीक कहउछन मैम इवन आपण हाथ रे जदी चकटी देबे ताको किछि समय आपण हाथ रो ताको क्लीन करे पे आपण केते समय लागि छिबो ठीक आज्ञा
जेतबळे आपणकर इंटेस्टाइन भितर को से जीव जीआई ट्रैक्ट भितर को जीव गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भितर को जीव सेतबळे आपणकर रहिछि स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन स्ट्रक्चर आपण माने जानि चंती केंचुआ भलिया जदि मेंचाई केंचुआ गोट जगह गदे देबा जो भलिया देखा छ एक्जेक्टली सेही भलिया तार स्ट्रक्चर एंड सेही जत अटके जीव से बाहरिबा को केते समय लागिबो ताको बाहरिबो की आज तो गोटे फॉरेन माने पार्टिकल्स गोटे मॉर्बिड पार्टिकल्स हमर जीआई ट्रैक्ट भीतर जाई जमीबो गोटे दिन जमीबो 2 दिन जमीबो 3 दिन जमीबो ताको एलिमिनेट करिया पय हमको डेली बेसिस पे डाइट रे नियाति रूपे फाइबर रिच दरकार हाई फाइबर डाइट not only high fiber diet is helpful for the elimination of that sticky nature that refined cereals along with that फाइबर हमको निहाती रूपे गोटे कोन ऑयली टाइप रो हेल्दी फैट्स निहाती रूपे दरकार आमे केते जण हेल्दी फैट्स डेली बेसिस रे नउचंती मु फ्रॉम द डे 1 मु कहिची बार बार एबे भी मु कहूची पर डे हम माने को हेल्दी फैट्स 25 टू 30 ग्राम्स निहाती रूपे दरकार समस्त को पई बट आमे केते नउचंती केते ग्राम्स रो फैट नउचंती हेल्दी फैट्स किए गोटे जण कहबे कि गोटे दिन रे गाई घी रो गोटे चम्मच खाउचंती बोली कि अछंती आपण भितरे किए आमे मैम यस मैम मु खाउची खाउची गोटे ग्राम रो गाई क्षीर जोडा कि मु घरे तयारी करूची सेटा आमे खाउचू गोटे आज्ञा मैडम प्योर सेटा आपनकर प्योर घी होतो हां प्योर घी हम खाउची सेटा गौड़ जो कथाटा कहउचंती या पूर्वर मु कहिथिली हार्मोनल इश्यूज नै कि डिसऑर्डर जहा जहा होउची सेई जो क्षीर आपण आनुचंती सेई क्षीर देसी इंजेक्शन दे कि हार्मोनल इम्बैलेंस है कि गाय तो सेई जो क्षीर आनी कि सेई थ्रू जति घियो बारुतबा ताले मु से विषय कहबे ना एनीहो हमको माने हेल्दी फैट्स भी दरकार टू एलिमिनेट हमर जो बॉडी रे जो ए सब जिंसटा कोडी चुपकी की रहितबो फाइबर रिच डाइट डेली बेसिस रे हमें खाइबा एटलीस्ट हमर सब इंटरनल क्लींजिंग बोले हेल्प करबो डेली बेसिस रे हमें साबुन लगे गाधे थांती हमर स्किन रो क्लीन पय एक्सटर्नली बट इंटरनल क्लींजिंग पय डेली बेसिस रे हमर डाइट रे नियत रूपे हेल्दी फैट्स एंड हेल्दी फाइबर रो आवश्यकता रहिछि एंड दैट प्रोटीन ना जो मु कथा कहितली स्टिकी इन नेचर यस मैम हाँ जो आपण माने देखिथिबे जो अट्टा को भी रखि देले किस समय ताको चकटला बले कोन ही होची गोटे माने अठाटा बले ही होची दस बेकिंग क्वालिटी ऑफ द व्हीट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए इनसॉल्युबल प्रोटीन हमरो व्हीट रे मध्ये इनसॉल्युबल प्रोटीन रहची एंड दैट इनसॉल्युबल प्रोटीन इज कॉल्ड एज द ग्लूटेन ओके एंड मेनली इट ड्यूरिंग द डॉग प्रिपरेशन wheat is such contain about 10 to 13% of protein and of these 8 to 10% of this gluten gives the dog in sticky nature rubbery and stretching quality and that is so desirable for our cooking when chapati dog is needed the gluten is formed and that starch stretch forming a net like structure in which the starch granules are embedded the structure helps the dog to rise the and thus makes the chapati soft okay and this gluten itself is a mixture of three constituents say gluten re puri tinta jinsa roichi first one is the gliadins and that gliadins which gives the stretchability to the drugs and the second one is the glutenins and that glutenins which gives the flexibility and the strength to the dog and the third one is the residue protein and these are the brittle and tend to form crumbs wheat carry about equal proportion of these three constituent and overall high gluten content सेति पई जो मानकर ग्लूटेन डिसऑर्डर थाए से मानको स्पेसिफिकली ए ओटा पटा को मध्य ओटा बा माने रोटी या ब्रेड या बिस्किट वगैरह जिंस को मध्य मना करा हिता है माने मना करि थाते नाम पई इन एक्सेस ऑफ रेसिड्यू प्रोटीन कॉजेस lethargy be feel to a patient and the chapati and the excess of the gliadins gives you a stiff chapati okay तो आपण जानिले वर्तमान जो इनसॉल्युबल प्रोटीन कोन कोन रहउची तीनटा मेनली हमर चपाती रे बा गहम रे रहउची गोटे होउची फर्स्ट  होउची आपनकर ग्लियाडिन्स ग्लियाडिन्स सेकंड 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 ग्लियाडिन्स
gliadins, GLIADINS, gliadins. Second one is the glutenins. Glutenins, GLUTININS, glutenins, and the third one is the residue, RESIDUE. A tinta got a different function, like the due to the presence of these gliadins, it gives the stretchability to the dog, and that due to the presence of this glutenins, which gives the flexibility and the strength to the dog, and due to the presence of residue protein, it is brittle and tend to crumbs. This is all about your wheat. तो हमें केते बोले जिते बोले हमें किणुचंदी दिस wheat तो हमको ए भलिया चूज करिया को गहम रे सिलेक्शन करिया बे बहुत बड़ा जिंस एंड सेमती राइस रे मध्ये आपण माने देखिथिबे राइस हमर डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइस इज अवेलेबल इन द मार्केट लाइक आपनकर म कहितली पूरा माने पूरा पॉलिश्ड सेमी पॉलिश्ड पारबॉइल्ड ब्राउन राइस एंड रेड राइस तो हमको जिते माने आउटर कवरिंग जार जिते ज्यादा थिबो एवं जेटा जिते मोटा वाला चाउल से बोले चाउल को हम डाइट निहाती नबा दरकार एंड जदि हम से बोले राइस नबा ताले हम जो कथा हम जेमति मिलेट कोन पे नबा ता द्वारा केते पॉजिटिव इंपैक्ट बॉडी रे रहै सिमिलरली जदि हम मोटा वाला राइस नबा सेथरे मध्ये आपनकर ब्लड रे इंस्टेंटली ग्लूकोज लेवल बॉडी बनी ता सहित आपनकर कोनसी प्रकार रेस्पिरेटरी दैट मे बी आपनकर ईआरटीआई हो किबा एलआरटीआई हो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो किबा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो ए प्रकार डिसऑर्डर होबनी पिला मानकर स्पेसिफिकली कफ फॉर्मेशन होबनी एंड आपनकर बॉडी रे सबले ग्लूकोज लेवल मेंटेन हेकी रहिबो एवं जो माने ओबेसिटी रहउचंती सेटा मध्ये ताको प्रिवेंट करिवो एंड हार्मोनल इश्यूज जदि थिबो ताको मध्ये से प्रिवेंट करिवो ता सहित ये आपनकर कौन सी प्रकार कार्डियोलॉजिकल इश्यू को मते प्रिवेंट ताको मते से प्रिवेंट करिवो कार्सिनोमा सेल को मते बढ़ेबा को दब नै बट केतेटा केसेस रे जदि जो मानकर क्रोनिक किडनी डिसऑर्डर अछि किमा ESRD एंड स्टेज ऑफ रेनल डिसऑर्डर जार रहिछि इन दैट केसेस यू हैव टू आपण ए जो पारबॉइल्ड राइस मोटा राइस एंड रेड राइस completely prohibited for them. You remember this point. मु आपण मानन को बहुत सारा पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ दिस ऑल द राइस रो वैरायटी ऑफ राइस रो मु कहि देली किंतु ओनली इन दिस केसेस सीकेडी केस रे किबा ESRD एंड स्टेज ऑफ रेनल डिसऑर्डर जो मानक डायलिसिस शांति से सब केस रे हमें ए भलिया राइस को हमें रेकमेंड करबा नाही स्पेसिफिकली किडनी डिसऑर्डर पेशेंट आउ थोड़े रिपीट करिवे कि से केस जो केस राइस प्रोहिबिटेड फर्स्ट वन होची आपनकर सीकेडी 1 हो सीकेडी 2 हो सीकेडी 3 हो क्रोनिक किडनी डिसीज 1 2 3 जेतेबेले किडनी डिसऑर्डर पेशेंट आपण मानक पाखु को आसीबे सेट ऑलरेडी मेंशन हेई थाई प्रेस्क्रिप्शन रे सीकेडी 1 कि सीकेडी 2 कि सीकेडी 3 स्पेसिफिकली सीकेडी 1 रे देले हमर चलिबो बट 2 3 एंड ESRD होची एंड स्टेज ऑफ रेनल डिजीज ESRD एंड स्टेज ऑफ रेनल डिसऑर्डर एटा 2 मार्क के क्वेश्चन रे मध्ये बेले बेले आपन को क्वेश्चन माने एग्जाम रे आसी जे व्हाट इज ESRD ओके हम इंडिया स्पेसिफिकली कौन करंती राइस दैट इज एट लीस्ट ए ईयर ओल्ड इज प्रिफर्ड सिंस इट कुक्स टू ए फिल्म टेक्सचर व्हाइल लीविंग द ग्रेन सेपरेटली हां आमे जेतोले भी राइस किनिबा आमे देखिबा जे आ गोटे आपण माने देखिथिबे जोटा कि माने हमर जो गंजाम डिस्ट्रिक्ट रही छी सेठी आपण देखिथिबे राइस को इवन धान को से माने जितबले माने चाष होय कि आसला परे गोटे वर्ष वर्ष संगे से माने माटी तळे से माने ताको रखि देई थांती प्रिजर्व करिकी एंड से राइस ता जितलो आपण आनिबे ना ताकू जितलो आपण रोसई करिवे एटा संगे संगे होबनी इंस्टेंटली से भातटा हे जीवनी ताकू आपण को निहाती 30 टू 40 मिनिट्स जस्ट लाइक आपण को पार्पल राइस रेड राइस एंड ब्राउन राइस को बनेबा पई कुकिंग पई जति की समय लागे सेति की समय पाखा पाखी पूरा लागि जाय बट दैट राइस इज मोर न्यूट्रिशियस मोर वेल बैलेंस्ड एंड इट्स वेरी गुड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ योर ईच एंड एवरी काइंड ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर यू रिमेंबर दिस पॉइंट एंड जो राइस गुड़ा को आपण माने जितबले आपण माने पके दोचंती पानी गरम हैला पकोचंती एंड इंस्टेंटली भात होची ताको गाली के आपण खाइ दोचंती दैट राइस इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ
okay, because it will indirectly it will enhance your glycemic index, and it also causes so many complications of GI disturbances. Okay, that's why you have to eliminate that type of, while purchasing the rice now you have to focus upon there also. जो राइस टा पूरा व्हाइटिश कलर हेतिबो, देखिया को अति सुंदर देखाउतो एंड देखिया को पूरा पतला लागुथुबो, से बले राइस को तो हमें निहात रूपे ताको एलिमिनेट करबा। जदि भी आपण कोठी दिया हेछि खाउचंदी तो राइस टा से समय कम ने कि अदर जो फूड माने जोडा को आपण आइटम्स वगैरह जहाँ थे ताको टिके अधिक कंज्यूम करिवे, सलाड टिके नेछि से जिंसटा को आपण छाडबे। जो राइस टा टिके ब्राउनिश कलर थिबो, टिके माटिया माटिया देखाउतो, एंड जो राइस को आपण गाड़ीला परे पेजटा पूरा पानी भलिया बाहरुथबो, से राइस टा आपण पे सेतिकी भलो। ओके, जो थ्री की स्टार्च कंटेंट जिते कम थिबा। आपण मन देखिथिबे गोटे गोटे चाउल आपण रोसे कर देला माने, भात गाली देला माने आपण को सेरा लागिबो जे गोटे माने गोटे सुजी रो हलवा गोटे जेमति गोटे बस मंड होई रही जाइछि, जानि छथि ना एमति हुए ना, केते केबे देखि छथि सेमते सेतरे स्टार्च अधिक था मैम, सेति पे मैम नुआ चाउल जेमति एक्जेक्टली नुआ चाउल रे मैडम सेटा अधिका थाए। मैडम एठी गोटे कथा कहू चाहूँ, जदि आम राइस टा कम समय फुटे निगाड़ देवा ताहले पतला आसीबो पेजटा, जदि टिके अधिका हो जाउछि ताले राइस जदि न होइतिबो आपण केमते कम समय ताको बसै दे कि बाहर कर देबे, इज इट पॉसिबल? केमते आपण खाइबे ताको जारो सेइति पई न्यूट्रिशनिस्ट माने आपण जो सब्जेक्ट चुनी चंती पढु चंती, सिलेक्शन ऑफ द फूड ग्रुप्स, सिलेक्शन ऑफ द फूड्स इज वेरी वाइटल। बुझी पाले आपण जितेबले मार्केट जितेबले आमे भी पढिथिलु, मु भी पाठ पढि कि माने मु भी जहा पढिची, मते भी मो गुरु जहा पढै चंती एया कहि चंती, जितेबले हम मार्केट जाउ चंती आपण देखिथिबे जितेबले मार्केट पहुंचु चंती माने जदि ब्रिंजिल खाउ चंती, ब्रिंजिल गोटे बिग साइज रो ब्रिंजिल थिबो, गोटे जगह रे छोट छोट साइज रो थिबो, तार गोटे किछि शेप साइज नथिबो, किछि स्ट्रक्चरल फॉर्म रे से नथिबो, एंड दैट ब्रिंजिल रे बहुत सारा पोका पोका सब लागिथिबो, बट दैट ब्रिंजिल इज वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। आउ जोटा देखा जो तो अट्रैक्टिव थिबो, एते बड़ थिबो, एते सुंदर थिबो, बट दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। सेमिति ही आपण सिलेक्शन करिवा, फूड ग्रुप्स रो आपण सिलेक्शन करिवा, दैट इज वेरी वाइटल। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ, मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ राइस रे देखंतु, जति हमें मनेकर ब्राउन राइस नउचंती, ब्राउन राइस रे इट कंटेन्स द कार्बोहाइड्रेट राइस जति नपा एथरे आपन का स्टार्च पाइबे आपन का 78। ओके, जति हमें ब्राउन राइस नउचंती ताले 77, एंड पॉलिश्ड व्हाइट राइस रे अपन पाइबे 80.9, एंड हैंड पाउडर्ड राइस रे अपन 78.1 पाइबे। सिमिलरली जदि आपनकर प्रोटीन कंटेंट देखिबे, जोटा कि आपनकर पार्बोइल्ड राइस सेतिर प्रोटीन अपन पाइबे पर 100 ग्राम्स, जदि हमरा राइस नैचुन सेतिर 7 ग्राम्स प्रोटीन अपन पाइबे, एंड ब्राउन राइस रे मते पाका पाकी सेतिकी आसीबो आपनकर। मन रखंतु पार्बोइल्ड राइस एंड हैंड पाउडर्ड राइस एंड ब्राउन राइस, ऑल दिस थ्री राइस इज वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। बुझी पाले तो ए तीनटा का पाखा पाकी सेम कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटीन अपन को सेही 7 ग्राम्स लाके देबे, जदि हम 100 ग्राम्स नउचन, एंड द फैट कंटेंट ऑफ द ब्राउन राइस, पार्बोइल्ड राइस एंड द हैंड पाउडर्ड राइस इज I mean fat content brown rice से ज़्यादा पाइबा, and it contains 2.4 grams of fat, and in the parboiled rice से अपन 0.8 grams पाइबे for 100 grams से, and hand pounded rice से 1.5 gram पाइबे। This is all about your major constituent of various forms of rice। सेमती आपनकर जदि हमें मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट कथा चिंता करबा, ब्राउन राइस रे हमें थायामिन जो पाउछंती हमें 320 माइक्रोग्राम, बट आपनकर पॉलिश्ड राइस रे मात्र पाइबे 15 माइक्रोग्राम। माने आपण चिंता करंतु ब्राउन राइस रे थायामिन केते रहउची, एंड पार्बोइल्ड राइस रे आपनकर 72 रहउची, जोतरे ब्राउन राइस रे आपनकर 320 मिलीग्राम आछुची, बट आपनकर व्हाइट राइस रे पॉलिश्ड व्हाइट राइस जोटा बासमती राइस रे आपण माने खाउचंती, सेथे आपण पाउचंती मात्र 15 ग्राम रो थायामिन। तो कोटा भलो आपनक पे आपण चूज करंतु ब्राउन राइस ना कोटा नेबे कोंतु कोटा नेबे ऑब्वियसली ब्राउन राइस। ऑल ऑफ यू रिमेन साइलेंट मैडम, पचारचंती तो कहि देबा एठी ब्राउन राइस पर घर को जाई बासमती राइस किनिबा। आमे जिते पाठ पढिले मते प्रैक्टिकली आमे ताको केते इंप्लीमेंट
करबा सेटा होची इंपोर्टेंट एटलीस्ट अपन जणे जणे तो माने घरे 5 जण थिले हम जणे जति एटलीस्ट चेंज करबा तार इंपैक्ट बॉडी रे कोन पड़ची जानबा हमको देखि कि ता जणे एटलीस्ट चेंज यस मैम ठीक ना मु भूल कहूची राइट मैम ठीक 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 Yes, है ma'am. ठीक मैम आमे 100% न ही पारले मते वीकली ट्वाइस थ्राइस त हमें नहीं परिबे जेंति संडे रे हमें समस्त एकाठी बसे कि डाइनिंग रे खाउ चलते घरे सब पिला माने समस्त रहिबे त हमें निहाती रूपे से संडे दिन ही रेड राइस बनेबा या पार्बल राइस बनेबा जेते एटलीस्ट हमें गोटे वीकली जेति कि हमको दरकार थायामिन विटामिन B1 जेति कि दरकार से तो हमें गोटे ये सोर्सेस तो पाई छिबा ना हमें यस मैम मैडम मार्केट रे बर्तन लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स चावल अवेलेबल हेलानी सेटा मैडम से ब्रांड कहे कि बुझी पारले ने आपण जदी एतिके टिके कोन नै कि बसी पडिबे एवं कहबे जे एथिरे एटा होची सेटा होची से सब गोडा को हमको देखिया पडिबो तार केतेटा माने एक्सपेरिमेंटेड केते हेची सब बोले हमें से पुरुना माने पूर्व जिंस को ही हमें जीवा लोकली सस्ता रे मु आपण माने कहबे गोटे ब्रांडेड राइस एटा 300 टंका रेड राइस मु देखिची बहुत सारा मेला पेला रे बहुत सारा जगह रे मिले किंतु आपण ताटू बेटर गोटे गां को जानतो पेरीफेरी को जानतो जोटी से माने निजे प्रोडक्शन करूतिबे सेटु 5-7 किलो आणंतो आ से माने सेइतरे आ देखंतु से जो चाउल आपण जो ब्राउन ब्रेड ना मते ब्रेड खाउचन सेतरे केते माने एडिटिव मिसिची केते कलरिंग एजेंट मिसिची तातु तो बेटर व्हाइट ब्रेड खाइबा बुझी पाले आमे खाली आमे माने दुनियाटा होची कलरफुल ताकू देखि कि बट हमको बी प्रैक्टिकल आ जेहेतु आमर जो साइंस ना आपण माने जो साइंस चुनी चंती सेटा को हमें प्रैक्टिकल बेस्ड होबा दरकार हमें कारण एमिति किछि जिंस नै जोटा कि हम हाथ पांते रे न मिलो बट हमको कोशिश करबे टिके ट्राई करबा को दरकार जो कथा हमें 300 टंका मेला पड़ले हमें जाई कि बुल्ली कि हमें सेठी परिश्रम करी कि सेठी भिडो भीतर जाई कि हमें 300 पर किलो रे हमें आनी परछन तो हमें रेदतन हमें केबे गोटे छुट्टी कटिया पे गोटे पेरीफेरी को जिबा सेठु काई कि हमें मासक पाई कि 2 मास पाई एट ए टाइम पैसा दे कि हमें किनिबन जोटा कि भलो जिंसटा हमें न पाइबे जोतरे कि हम समस्तंकर हेल्थ सेतरे ए हे परिबो सब दिन न होले मध्ये एटलीस्ट वीकली वन्स और ट्वाइस हमें ए बळे मु जो जो जिंस आपन को रेकमेंड करूची हम सब दिन न नै करंती बट जितो बळे आपन को गैदरिंग घरे एकाठी होचंती समस्त या संडे फंडे दिन जेमति रागी मिलेट आपन केबे न खातो वीकली थ्राइस तो नै परिबे ट्वाइस तो नै परिबे वन डे भी नहीं परिबे जदि आपन घरे इंप्लीमेंट करि नाहंती तो जदि भी घरे करले जदि हमें बरा सिंगड़ा पकोड़ी खाउचंती हमको जते टेस्ट लागतो ए जिंस इनिशियली तो भलो लागिबनी बट से जिंस जेहेतु हमको जतो डिसऑर्डर हुए डिजीज हुए जतो हम हॉस्पिटलाइज होंती जतो हमको इंजेक्शन दिया हुए कि ओरली एनी टैबलेट्स फॉर्म में दिया हुए या सेमी लिक्विड फॉर्म में दिया थोड़ी हमको से भलो लागे कि हम कोन खान बिकॉज़ हमें रिकवरी करबा पई तो जस्ट लाइक दैट ओनली हम कहीं खाद्य रे में कंप्रोमाइज न करबा कोन ठीक लागुची ना भूल लागुची आज्ञा मैडम Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक यस मैम एंड स्पेसिफिकली ना जो पार्बोइल्ड राइस था हम कहउथिली एंड पार्बोइल्ड राइस इज वेरी चीपर देन दैट ऑफ द पॉलिश्ड राइस एटा तो आपण माने समस्त जानि छथि हम कहबा ही दरकार नै and use of parboiled rice is in the eastern and southern part of the India is an excellent and the major source of because जेतेबेले जेते ब्रांड थाए आउटर कवरिंग थाए ना सेते बी कॉम्प्लेक्स सोर्सेस ता बहुत अधिका थाए and so very good for the rich sources of vitamin B1 is also there and this parboiled rice is also cheaper than that of the polished rice in areas where the hand pounded or the parboiled millet rice is used and this is very good for the thiamine deficiency disorder and due to the deficiency of thiamine very is occur and हमें जदि parboiled rice नबा तले निहात रूपे आपको हमें प्रिवेंट कर दे पारिबा and our next one is our next cereals is our millet okay millets and this millets are the example of millets are the jowar bajra ragi and that foxtail millet kodo millet brown cup millet and kodra and that different types of china so many kinds of millets is available in the market they are commonly grown in the whole of the Deccan plateau where the rainfall is very less and this bajra jowar is very good for the health because it contains the richest sources of fiber and calcium
and other macro and micro nutrient is also there. And if you will compare with the zinc content for the millets is also very high, and zinc is also very good for the body, and it also very good act as the antioxidant. And now I will compare about the between the wheat, jowar, bajra, maize, ragi, and barley. Carbohydrate content of the wheat, per 100 gram of wheat, it contains the carbohydrate only 65 grams. And jowar contains about 72, and bajra contains 67. Maize contains 68, and ragi it contains the 72 grams, and barley it contains 70%. And the iron content of the wheat is 4, jowar is 6, bajra is 5 in 100 grams, and ragi contains the richest sources of iron, and 100 grams of ragi it contains the 6 grams of iron, and also barley contains 3 grams of iron. If we will consider about the calcium, in 100 grams of wheat it contains the 45 grams of that calcium, and in 100 grams jowar it contains the 37 grams of calcium, but in ragi 100 grams of ragi it contains the 344 micrograms of this calcium, and barley is also contains 26 grams of calcium. That's why in mu jemti apanku कहली सप्ताह को थरे आपण पार्बल राइस नियंतु, सप्ताह को थरे आपण एटलिस्ट आजिर सेशन को आपण एटलिस्ट एतिकी लर्न करंतु, माने वीकली वंस रखंतु आपण पार्बल राइस, वीकली वंस आपण रखंतु रागी, वीकली वंस आपण रखंतु मिलेट. And nutritional factors, କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ କଣ? ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍ କିଛି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ. ଘରେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ନା, କେହି ଖାଆନ୍ତୁ या ନ ଖାଆନ୍ତୁ, ନିଜେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣ କଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ. ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କାଉନ୍ସିଲିଂ. ଆଉ କାଉନ୍ସିଲିଂ ଆପଣ ସେତେବେଳେ କରିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜେ ଆପଣ ସାଇନ୍ସ ବିଷୟରେ ସେତିକି ଡେପ୍ଥ ହେଇପାରିବେ. ତ ସେତିକି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ପଢିକି ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମାନେ ନଲେଜ କୁ एक्वायर କରିବାକୁ ପଡିବ. ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ କାହାକୁ ଭଲସେ ବ୍ରିଫଲି ବୁଝେଇ ପାରିବା, କାଉନ୍ସିଲିଂ କରିପାରିବା, ଏବଂ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଭଲସେ ଅବଜର୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ କରିବେ. The nutritional factors in selection of the cereals. Cereals are the best as well as the cheapest sources of energy, and specifically the starch present in the cereals are valuable energy foods, makes up about 75% of the cereals. Cereals also contains the significant amount of protein is also there, and that is the tissue building food. These cereals proteins, although incomplete because of the deficiency of amino acid lysine, are well utilized by the body, and when properly supplemented with the meals, eggs, meat, and pulses and other cereals, then they largely meet the body of the requirement satisfactorily. And cereals are also contains the certain amounts of fats, and they will also fat amounts of minerals and the vitamins also. They are relatively high in the phosphorus but uniformly low in the calcium, except of ragi, and their iron content is very widely nutritionally. Mainly this choice of the cereals largely depend upon the availability, dietary habits, and the cost. ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ବି କହିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ cereals ନେଉଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଗୋଟେ କମି ରହୁଛି, ତାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ଲେନ୍ cereals ନେଲେ ସେଟା କିଛି ମଧ୍ୟ ବଡି ଏତେ ଭଲ ଫଙ୍କସନ କରିବ ନାହିଁ. ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ cereals ସହିତ we have to include the pulses also. Then ଆମର ଯୋଉ ଲାଇସିନ୍ ଆଉ ମେଥିଓନିନ୍ ର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ସମାନ ରହିବ, ଆମ ବଡି ପାଇଁ ତାର ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିବ. Okay, while buying wheat, look for the plump looking kernel which are not broken or shriveled. Ensure that the grains are clean, free from the dark gravels, etc. And parboiled rice, buy parboiled rice as it is the cheaper and has more nutrient than that of the milled rice. And that cereals flour like the maize flour, jowar flour, and the wheat flour is free from the insects, lumps, and molds. ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମିଲେଟ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ଆପଣ ଯେତେ ମିଲେଟ୍ ମାନେ ଆମେ ମିଲେଟ୍ରେ ଆପଣ
6 मास वर्ष पर्यंत रखिबे जोटी स्टोर करके मिलेट रे कोनसी प्रकार आपनकर पोक लागिबो नाही बिकॉज सेथरे कोनसी प्रकार इंसेक्टिसाइड किबा पेस्टिसाइड जेतबे सेटा प्रोडक्शन हेइताय ना मिलेट्स उडा को तो सेथरे कोनसी प्रकार इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स यूज हेइ न थाय तो जदि पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड हम यूज करबे त से गछटा मरि जिवो तो सेइति पाई ही एते सारा न्यूट्रिटिव वैल्यू थाए मिलेट्स रे सेइति पाई ही हमें ताको निहाती रूपे नबा दरकार किंतु आपण जे कोनसी फूड सप्लीमेंट माने सोर्सेस कथा आपण चिंता करन एमति कोनसी फूड नाही मु नॉट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट द cereals कथा कोनतो पल्सेस कथा कोनतो रूट्स ट्यूबर्स कथा कोनतो अदर फ्रूट्स वेजिटेबल्स कथा कोनतो मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट कथा कोनतो फैट्स कथा कोनतो प्रोटीन्स कथा कोनतो जहां भी कथा आपण कंसीडर करंतो सेतरा हमर निहाती रूपे किसी इंसेक्टिसाइड किबा पेस्टिसाइड दे किछि ना किछि गोटे एडिटिव मिसी कि थाए बट एही आपण मिलेट्स रे जदि किछि जिंस ऐड कर दोचन ताले सेटार प्रोडक्शन हे परिबो नाही से नष्ट होई जिवो तो सेइति पई बोली मिलेट्स को निहाती रूपे आपण माने सप्ताह को थरे या दुई थरा खाद्य इंप्लीमेंट करंतो बिकॉज़ एटा एंटी कार्सिनोजेनिक कैंसर सेल को मध्य बढ़ेबा को देबो नाही कैंसर जो ट्यूमर सेल्स गुडा को ग्रोथ हवा शरीर भीतर आरंभ करते ताकू मध्य से प्रिवेंट करबो एला दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेक्शन ऑफ द cereals. Next one is the selection of the roots and tubers. It's also very important. Some of the roots and tubers, example of the roots and tubers are the sweet potato, tapioca, yam, colocasia, and the potatoes. All these roots and tubers, it contains the richest source of carbohydrate and also provides the calorie. Okay, potato range start at the source of the energy in the wild dietary. They also contain the significant amount of vitamin C also. Tubers like yellow varieties of yam are rich in carotene. आपण देखिथिबे गोटे गोटे आसे हळदिया कलर रो जो माटी तळे लंबा लंबा सारू टाइप रो जो आसे सेथि रिचेस ऑफ केरोटिन इज आल्सो देयर root tubers root vegetables like the tapioca commonly used in the Kerala are such high yielders per acre of plants that they have served as the emergency of famine foods in times and cereal shortage सेटा बहुत भलो जिंस गोटे जोटा टापियोका एंड स्पेसिफिकली हमर सेटा केरला कथा छाडंतो बट हम ओडिसा कथा जति मु कहबी निहाती रूपे आपण जिते बोले कि कंदमूल सीजन रे बुझि पाले मार्केट जति जाउचंती कंदमूल केते टंका होतो ना काहे कि जो नाली कंदमूल निहाती रूपे आनी कि आपण ताको खाद्य रे निहाती रूपे नबा दरकार पोटैटो इज द मोस्ट versatile of all the roots and all these roots and tubers are highly energy dense and it is the energy giving foods also and when buying the potatoes make sure they are of one variety well shaped smooth and roughly of one size they should be clean firm and free from the any kind of decay and specifically new potatoes as desired they should be matured the skin should be unbroken and should cling tightly आपण सबोले मने रखि थांते जोडा कि ग्रीन कलर पोटैटो गुडा को केबे मध्ये कोनसी केसेस में मध्ये ताको खाइबे नाही किबा परचेज करिवे नाही सेटा टॉक्सिसिटी न्यूरोटॉक्सिसिटी करे थाए नर्वस सिस्टम को मध्ये टॉक्सिक पहुंचे थाए बुझि पाले इवन बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन नै कि पेशेंट आस्थाने तो जोटा ग्रीन कलर आलू ताको सबले अवॉइड करबे एक्सेस डार्क एंड स्कैबिसनेस सनबर्न हॉलो एंड ब्लैक हार्ट एंड डीके आर ऑल द ऑब्जेक्शनेबल क्वालिटीज इन पोटैटो तो देखिला आपने परचेज कला टिके देखि कि ही किनिबे while purchasing the root and tubers select according to your needs buy all potatoes if you want to make cutlets or any other mass potato preparation avoid the new potatoes because it is sticky and lumpy and reject the potato which is very deep eyes green skin and with coarse हमर देखिथिबे खंड खंड केबे केबे माने कटा पटा दाग थिबो कि हमें किनला बेले किनि जंतु बट यू हैव टू अवॉइड दैट वन आल्सो while buying the potatoes ensure that they are of one variety well shaped and smooth and roughly of one size also and the last one is your इबे तो बटन टाइम नी गला 6टा हमर बची गला नेक्स्ट क्लास रे हमें अदर जो है रहिछि सिलेक्शन ऑफ द फूड पैटर्न्स oils or the selection of the perishable and non perishable foods विषय हमें डिस्कशन करिबा हला आ मु आपण माने को कहूची जो मटेरियल्स जहां भी आपण माने आपण को भीतर कलेक्शन करिया पे ट्राई करंतो
अदरवाइज आप डायरेक्टली सेंटर सहित कम्युनिकेट करके मागिबा पई चेष्टा करंतु कारण आपनकर एमती भी मते लागुची एते सारा पढ़ाई गलानी सेतिकी जदि आपण माने घरे न पढ़िबे खाली क्लासेस रे सुनि कि किछि लाभ नै एटलीस्ट आपण गोटे गोटे थर एटू तो क्लास रे 2 घंटा दउचंती जदि घरे आपण हाफ एन आवर दे कि आज जा डिस्कशन ला टिके ओवरलुक कर देबे तो आपनका माइंड रे पूरा सेटा सेट हे कि रहि जेबे या कि आपण एग्जाम रे एटलीस्ट आपण गोटे क्वेश्चन अटेंड करि परिबे सेतु किछि मार्क सिक्योर करि परिबे खाली सर्टिफिकेट रो किछि वैल्यू न थे आपन को नॉलेज आ स्पेसिफिकली ए गोटे न्यूट्रिशन गोटे एते बड़ सब्जेक्ट आपन तो डीएनएच रे ही पाद देइचंती एटार जेते पढ़िले भी आपन को कमी पड़ी जिवो एंड आरो गोटे आजिका डेट रे गोटे ब्राइट फ्यूचर अछि आपन निहाती रूपे जेहेतु भर्ती हेचंती जेति की समय दोचन तो प्रॉपर यूटिलाइज करंत एवं निजे निजर टिके सेल्फ स्टडी करिया पे ट्राई ओके एक्सक्यूज मी मैम कौन अछि एक्सक्यूज मी मैम हाँ मैम ए जो आपण तीनटा जिनिस ऐड करिया को कहिले संडे को माने वीकली मास भितर पाराबल राइस मिलेट आ गोटे थर्ड टा कोन कहिले पार्बल राइस कहली पार्बल राइस आपण नै परिबे नहले रेड अच्छा अच्छा राइस सॉरी मैम पार्बल मिलेट हाँ पार्बल राइस को रेड राइस को किबा ब्राउन राइस जोटा आपनकर अवेलेबल सेटा नियंतो मिलेट गोटे वीकली वंस मिलेट गोटे रागी गोटे खाद्य रे रागी गोटे निहाती रखन एंड जहां भी आजी टू एटलीस्ट आपण जो डाइनिंग रे जो प्लेट ता सर्व करछन आपण देखंतु केतेटा कलर रो फूड या वेजिटेबल्स आपण ऐड करछन सेटा करके फोकस करन ओके ऑलरेडी हमर टाइम Thank you, हे ma'am. गलानी एबे सेशन को Thank you, ma'am. नेक्स्ट क्लास हम आउ जहां आपण को ये थिबो हम डिस्कशन करब ओके थैंक यू ऑल ऑफ यू थैंक यू थैंक यू मैम थैंक यू ग्रुप रे ऐड हेबा पई टिके लिंक